वो इनकी आवाज में भी सुनाई देता और इनके काम में भी सुनाई देता। मैं नितेश जी आपके लिए कोई इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, पर दिल से आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी भी जो बैठने 1 घंटा बैठना मेरे लिए मुश्किल है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द नी रिप्लेसमेंट। बट आप जब इतना परसुएड करते हैं और होता क्या कि एनीवे मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता आपके बारे में, टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि आप कुछ प्रश्न रखेंगे हमारे सामने और वो प्रश्न का हम कुछ जवाब देंगे। आपने प्रश्न तो कोई रखा नहीं, अब इसका मतलब ये है कि आप हमें सिर्फ सुनेंगे, आप अपनी किसी बात का जवाब नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंक ब्रांच ऑडिट का जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है, वो बदल रही है। और इस बार का जो सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मुझे नहीं पता कि कितने लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी आपके स्टडी सर्कल में। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं नितेश जी इस वक्त? सर अभी 167 लोग ऑलरेडी हैं। अच्छा, आगे 160 तो बहुत है इस सीजन में, 160 बहुत है सर। 450 से ऊपर रजिस्ट्रेशन है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 250-300 हो जाएंगे। एनीवे इस साल तो 100 के ऊपर का कोई भी नंबर अच्छा है, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर ने जो इस बार कहर ढाया है, 5 बैंक ऐसे हैं जहां 10 बैंकों में से 10 बैंक हैं टोटल। बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं थी, पीएनबी में कोई वैकेंसी नहीं थी, पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई वैकेंसी नहीं थी, इंडियन बैंक में कोई वैकेंसी नहीं थी, और एक सेंट्रल बैंक में भी शायद कोई वैकेंसी नहीं थी। 10 बैंकों में से 5 बैंक, जिनमें से 3 बैंक तो बहुत बड़े हैं, पीएनबी, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और अब तो इंडियन बैंक में क्योंकि इलाहाबाद बैंक बैंक ऐसे हैं, आप पंजाब एंड सिंध बैंक छोटा मान सकते हैं, बाकी तो 4 बैंक ऐसे हैं। और वो क्यों नहीं थी? क्योंकि आरबीआई ने कहा कि 80% मास का ऑडिट करवाने की जरूरत, एडवांस परसेंटेज तो कम हुई, ऑडिटेबल एडवांसेस की सिर्फ 10%, परंतु ब्रांचेस कम हो गई होंगी 25%। और जो 25% ब्रांचेस कम हुई उसका, हालांकि उन्होंने एक रिलीफ दिया कि भाई आप किसी को भी इस बार 3 ब्रांचेस नहीं देंगे, सबको 2-2 ब्रांचेस देंगे। ये सर का नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। सर का नेटवर्क फ्लक्चुएट करना, सर को ये बोलना पड़ेगा वीडियो ऑफ करके करे तब ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ तो फिर बेटर रहेगा जी, वो बेटर रहेगा सर, वीडियो ऑफ करके करेंगे तब बेस्ट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। सर आप वीडियो ऑफ करके ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑफ करके आप करेंगे तो आपका माने ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बैंडविड्थ बेटर आएगा फिर सर। हाँ बैंडविड्थ बेटर आएगा। मुश्किल ये है कि नीतीश जी, अगर मुझे वीडियो ऑफ करना था तो मैंने टाई क्यों लगाई? सर वी आर एडजस्टिंग विद द प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, नहीं मैं तो इट वाज मोर इन द लाइटर वेन देन इन द सीरियस बेसिकली, क्योंकि मैं नॉर्मली टाई आजकल लगाता नहीं हूँ। मैं तो मैंने कहा नीतीश जी ने सामने बैठना है तो टाई लगा लेनी चाहिए बेसिकली। अरे सर तो
The point that I was trying to raise was कि समस्या ये है कि 10 में से 5 बैंकों में कोई वैकेंसी नहीं है, तो नेचुरली कंसिक्वेंस यही होगा कि भाई आपके पास जो ब्रांच ऑडिट है वो आएंगे कैसे। इस बार टोटल वैकेंसीज मेरे हिसाब से, मेरा अपना गैस है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट फिगर है, मेरा अपना गैस है कि इस बार किसी भी सूरत में बैंकिंग इंडस्ट्री में जो नए ऑडिटर्स अपॉइंट हुए होंगे वो 1200 से ऊपर अपॉइंट नहीं हुए होंगे। आपका टोटल जो पैनल जाता है वो 35 से 36 हजार का जाता है, उसमें से मैक्सिमम जो एकोमोडेट हुए हुए होंगे बैंक ब्रांच ऑडिट में इस बार वो 12,000 13,000 के करीब होंगे। तो 23,000 ऑडिटर अभी भी फर्म्स, जबकि बैंक को यह कह दिया गया कि आप दो बैंक्स भी अगर दो ब्रांचेस भी अगर आप एलोकेट करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं, मतलब कि उनको यही कह दिया गया कि भाई आपने 2 से ऊपर तो ब्रांचेस किसी को देनी नहीं, और अगर आपने ये कह दिया होता कि 3 देनी है तो शायद एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स भी कई उसमें से बाहर हो जाते। सच्ची बात यह है। तो इसके कारण है कुछ। और दूसरी बात सबसे सीरियस विषय है कि भाई अगली साल के लिए तो बैंकों को यह कह दिया कि आपकी मर्जी है, आपने 70% का करवाना है, 60% का करवाना है, 50% का करवाना, परंतु जितने एडवांसेस का ऑडिट होना उसमें से 15% कम से कम एडवांसेस का ऑडिट सेंट्रल ऑडिटर द्वारा होना चाहिए। 70% भी करना, मैं 70% रिटेन ही करते, तो उसमें से कम 15% बोला है सेंट्रल ऑडिटर्स को, तो सेंट्रल ऑडिटर 20 से 25% के बीच में करेंगे डेफिनेटली। अगर वो 20 से 25% करेंगे तो बाकी बचे आपके 50%, 45%। 3 ऑडिटर से 4 ऑडिटर, किसी बैंक में 3, किसी में 4, किसी में 2 और किसी में 10, ये ऑडिटर तो करेंगे 25% और 20% के बीच में। और बाकी जो आपके करीबन 12,000 के करीब ऑडिटर्स हैं वो कितना परसेंटेज करेंगे? वो परसेंटेज करेंगे करीबन 45 से 50%। तो आप देख लीजिए कि क्या हाल होने वाला है। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैं तो पिछले 15 साल से एक बात बोल रहा हूं और मैं फिर आज भी ये बोल के जाऊंगा कि भाई अपनी जो डिपेंडेंस है ब्रांच ऑडिट के ऊपर अगर आप रिड्यूस कर लेंगे तो इट्स मच बेटर। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी तो रिड्यूस करी थी, इन द सेंस कि आपको ये कह दिया गया कि 2 ब्रांचेस से ज्यादा मिलनी नहीं है। अगर 2 कैटेगरी 4 की ब्रांचेस मिली भी, लाख रुपए का काम मिल भी गया, 1.25 लाख का काम मिल गया, तो 10,000 रुपए महीने का काम है। तो आरबीआई ने ये कह दिया अगर नहीं भी मिलता तो मैक्सिमम लॉस कितना आपको साल का? 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। इतना तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई और प्राइवेट क्लाइंट अगर आप डेवलप करेंगे तो आ जाएगा। तो मेरा अपना मानना यही है आज की डेट में, और ये मैं 15 साल से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल जब से मैं बैंक ऑडिट के ऊपर बोल रहा हूँ तब से ये कह रहा हूँ कि अपना जो डिपेंडेंस है ब्रांच ऑडिट के ऊपर वो रिड्यूस कर दीजिए। उसका कारण है कि ब्रांच ऑडिट का वो स्वरूप रहेगा नहीं। आपके 2-3 कारण है। एक कारण तो ये कि जब बैंकों ने आईटी में इतना हेवीली इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो फंड बेस्ड ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन है, जो एनपीए जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन है, हाँ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर अगर आपने किसी अकाउंट का एनपीए करना, वो इंफॉर्मेशन शायद अवेलेबल ना हो आपके सेंट्रल ऑफिस पे। अदरवाइज बाकी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है सेंट्रल ऑफिस पे, जोनल ऑफिस पे, रीजनल ऑफिस पे। तो नेचुरली बैंक्स का अपना मानना, आरबीआई का ये मानना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ऑडिट, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, एक्सिस बैंक का, आईडीबीआई का, ये बिना ब्रांच ऑडिट के हो सकता है तो उस केस में शायद जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनका भी ऑडिट
बिना ब्रांच ऑडिट के हो सकता है या कम ब्रांच ऑडिट के साथ हो सकता है। ये बात सही है गलत है, मैं अभी इसकी बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये जरूर कहना चाहूंगा कि आरबीआई इस भ्रम में है कि प्राइवेट सेक्टर के जो सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो सिस्टम है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं एट द हेड ऑफिस। जबकि मैं जब रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट अवेलेबल है सीबीएस सिस्टम में, परंतु स्टॉक स्टेटमेंट्स आज की डेट में भी डिजिटाइज नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करोर्स आर नॉट डिजिटाइज, क्रेडिटर स्टेटमेंट्स आर नॉट डिजिटाइज, डेटर स्टेटमेंट्स आर नॉट डिजिटाइज। तो जब ये डिजिटाइज नहीं है और इनके बेसिस पे अगर कोई अकाउंट एनपीए होना है तो वो ब्रांच लेवल पे बैठ के हो सकता है, वो आपका सेंट्रल ऑफिस के लेवल पे बैठ के नहीं हो सकता। तो इंस्टीट्यूट के लीडर्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को ये कन्विंस करना चाहिए कि भाई कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लागू हो सकती हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लागू नहीं हो सकती। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये जरूरी होगा कि आप ऑडिट ब्रांच लेवल पे करवाएं। अगर आप लोगों को याद हो, जो सीएस हैं 2010 के पहले के, उनको ये याद होगा कि पहले एक मूव हुआ था कि भाई जब हमारे एडवांसेस, जो ऑडिटेबल एडवांसेस की ब्रांचेस थी वो 6 करोड़ वाली थी, तो आरबीआई चाहता था कि 50 करोड़ इसकी लिमिट कर दें। उस वक्त हमने आरबीआई वालों के साथ मिलकर उनको कन्विंस किया कि आप ये जो कह रहे हैं सिस्टम्स की बात, ये सिस्टम्स की बात कोई सही नहीं है। ये आपकी एक फैलेसी है, एक आपका भ्रम है कि सारे के सारे जो बैंक्स हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें इतनी डिजिटल, इतनी आईटी सिस्टम है कि अपने आप एनपीए जनरेट कर लेंगे। तो फिर वो 50 करोड़ से घट के लिमिट उन्होंने 20 करोड़ की थी, मुझे अभी तक याद है। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में भी जरूरत इसी बात की है कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों को जाके ये कन्विंस कर सकते हैं। मैं अभी भी ये समझता हूं कि हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई ऑल इज नॉट लॉस्ट एज येट, बेसिकली सो फार एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न। और दूसरा, इस साल के जो ऑडिट हो, जो ब्रांच ऑडिट हो, उनमें अगर सिस्टम्स में डेफिशिएंसीज निकाल सके, हम उनके आईटी सिस्टम में डेफिशिएंसीज निकाल सके जो कि हम आरबीआई वालों के पास ले जा सके और ले जाके उसको ये प्रूव कर सके कि आपका जो मानना है कि आईटी सिस्टम्स आर फुल प्रूफ इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये आपका भ्रम है, तो शायद बैंक ब्रांच ऑडिट कुछ और साल चल सकता है। मेरा अपना मानना यह है कि भाई आरबीआई का ये भी समझना है कि आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की टोटल फी है, ऑडिट फी है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच ऑडिट होता। परंतु अगर ब्रांच ऑडिट होना है तो ये फीस रहेगी, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। परंतु कन्विंस करने की बात यह है कि आईटी सिस्टम्स क्या फुल प्रूफ है या नहीं है, उसमें इस बार के ब्रांच ऑडिटर्स का बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और तीसरी बात, क्वालिटी तो जरूर इंप्रूव करनी पड़ेगी ब्रांच ऑडिट में। क्वालिटी अगर नहीं इंप्रूव करेंगे तो हम दिक्कत में रहेंगे, ये आपको बता सकता हूं। कोई भी प्रेसिडेंट आए, कोई वाइस प्रेसिडेंट आए, कोई काउंसिल आए, कोई और आए, रीजनल काउंसिल आए, अगर हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने ऑडिट से, तो काउंसिल मेंबर्स का या पीडीसी चेयरमैन का जाके कन्विंस करना किसी भी रेगुलेटर को बहुत मुश्किल है। हमें भी दिल पे हाथ रखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमने एक्चुअली ब्रांच ऑडिट में किया क्या है। और अगर हम यही कहते रहेंगे कि साहब हमारा काम तो सिर्फ एनपी आइडेंटिफिकेशन का ही है, तो वो कहते हैं एनपी आइडेंटिफिकेशन तो ब्रांच लेवल, हम सेंट्रल लेवल पे कर सकते हैं, सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे बाहर निकल के अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जो सिस्टम्स की रिपोर्ट है, जिसमें कि सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जिसमें
ये अगर हम उसको सही ढंग से बताएं तो हम ये बता पाएंगे कि भाई आपकी क्रेडिट सैंक्शनिंग में क्या डेफिशिएंसीज हैं, आपके क्रेडिट डिसबर्सल में क्या डेफिशिएंसीज हैं, आपकी क्रेडिट मॉनिटरिंग में क्या डेफिशिएंसीज हैं। ये सब चीजें अगर हम बता पाएंगे तभी हम किसी तरीके से ब्रांच ऑडिट को रिटेन कर पाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। और अगर हम यही कहते रहेंगे कि जी बैंक वाले तो टाइम नहीं देते, टाइम तो आपको प्राइवेट क्लाइंट भी नहीं देता, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देता कोई प्राइवेट क्लाइंट, कोई टैक्स ऑडिट वाला आता है आपके पास मई में या अप्रैल के अंदर? अगस्त और सितंबर में आते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो सितंबर में 30 तारीख को 5:30 बजे आपके द्वारे आते हैं। कोई आपको टाइम नहीं देना चाहता, तो व्हाई टू ब्लेम ओनली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर दैट मैटर? पब्लिक सेक्टर बैंक में तो फिर भी आपको 3 से 5 दिन या 5 से 6 दिन एक छोटी ब्रांच के लिए, 8-9 दिन आपको मीडियम साइज ब्रांच के लिए और 10-12 दिन आपको बड़ी ब्रांच के लिए मिल जाए। आप मुझे बताइए टैक्स ऑडिट में कितना टाइम देता आपको प्राइवेट क्लाइंट? आई विल लीव इट टू यू। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और दूसरी बात आपको ये बता सकता हूं कि देखिए बैंक मैनेजर का तो काम है, ऑडिटर को कोई पसंद नहीं करता। मेरे द्वारा भी पीयर रिव्यूअर आएगा, मैं उसको भी नहीं पसंद करूंगा। उसकी ये कोशिश रहेगी कि ब्रांच ऑडिटर जितनी जल्दी बाहर चला जाए उतना अच्छा है। तो वो अपने हर हथकंडे को अपनाएगा कि भाई आप मत कर पाए काम। परंतु मैंने असाइनमेंट करनी है, प्रोफेशनल मैं हूं, मुझे किस प्रोफेशनल तरीके से असाइनमेंट करनी है वो मुझे डिटरमिन करना, वो मुझे डिटरमिन करना, वो उसको डिटरमिन नहीं करना। और आज की डेट में तो नीतीश जी या हरिराम जी, मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछ लूं कि भाई हर व्यक्ति को 2 ब्रांचेस तो करनी है इस बार। अगर छोटी ब्रांचेस होंगी तो आपको 12-13 दिन लग जाएंगे, बड़ी ब्रांचेस होंगी तो आपको 20 दिन लग जाएंगे। अगर आप 4 तारीख को भी शुरू करते हैं, अगर आप कैटेगरी 1 ऑडिटर हैं तो आपसे तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपके पास इतना स्टाफ है कि दोनों ब्रांचेस से एक ही टाइम पे शुरू कर सकें। अगर आपकी छोटी कैटेगरी है तो आप ये कह लीजिए मैं तो एक एक ब्रांच करके करूंगा, तो भी आप 15 तारीख तक, 4 तारीख को शुरू करके भी 15 को, 16 को, 17 को खत्म कर लेंगे। और अगर आप बड़ी कैटेगरी में तो आप 2 ब्रांचेस इकट्ठी शुरू करेंगे तो भी आप 15-16 को जाके खत्म कर लेंगे, 17 को खत्म कर लेंगे। अब तो 3 ब्रांचेस है नहीं। तो हम ये क्यों कहें कि हमें टाइम नहीं मिलता? हम ये क्यों कहें कि हमें टाइम नहीं मिलता? मेरे ख्याल से मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, प्रोफेशनल कलीग से रिक्वेस्ट है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिलता। हम ब्रांच में जाएंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम राइटिंग में मांगेंगे, वो रिक्वायरमेंट हमें दे देगा, हम उसको चेक कर लेंगे। नहीं देगा, हम अपना जिस दिन ऑडिट कंप्लीट करेंगे अपनी रिपोर्ट में डाल देंगे कि ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, ये नहीं मिली थी, इन इश्यूज के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। बात खत्म हुई ना। रिपोर्ट मेरी वजह से कंसोलिडेशन नहीं रुकनी चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, मेरी वजह से। तो मेरी वजह क्या है कि मैं इस बात पे बैठा रहूं कि साहब जब तक वो मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा? नहीं, यही गलती है हमारी। मैंने उसको राइटिंग में एक चीज दे दी, वो मुझे जवाब दे देता है, बहुत बढ़िया, मैं उसको रिमाइंडर दे दूंगा। वो मुझको जवाब नहीं देता, मैं वहां से उठ के आऊंगा, अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा, जो जो इंफॉर्मेशन मांगी थी नहीं मिली थी उसका डिस्क्लेमर दे के या को रिपोर्ट क्वालिफाई करके हाथ में पकड़ा दूंगा। स्कोप लिमिट मेरी वजह से किसी भी सूरत में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी वजह से किसी भी सूरत में कंसोलिडेशन हेड ऑफिस के ऊपर हेल्ड अप नहीं होनी चाहिए। ये भी कंप्लेंट्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कि हम लोग किसी ना किसी वजह को लेके रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं देते और बैंक्स की कंसोलिडेशन हेल्ड अप रहती है ब्रांच ऑडिटर्स की वजह से। तो मैं ये क्यों अपने ऊपर खून लूं? मैं ये खून अपने ऊपर लूंगा ही नहीं। मैंने ये कह दिया कि ये रिकॉर्ड नहीं दिया आपने, अब सेंट्रल ऑडिटर मंगवाएगा ना वो रिकॉर्ड, अगर उसको मंगवाना होगा।
और वो बिना उसके करना चाहता है तो उसको करने दीजिए, फिर जो खून होगा वो उसके सिर होगा, अगर कोई गलती होगी तो उसकी पकड़ी जाएगी, मेरी क्यों पकड़ी जाएगी? तो मेरी आप सब भाइयों से एक ही प्रार्थना है, काम शुरू कर लें, 4-5 तारीख तक काम शुरू करें, 20 तारीख तक काम निपटा दें। बैंक वाला कहेगा 7 तारीख तक कर दो, 8 तारीख तक कर दो, 9 तारीख तक कर दो, वो कहने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर रिपोर्ट अपनी 18 तारीख 20 तारीख तक दे दी है, नो नथिंग कैन हैपन टू यू ऑन दिस अर्थ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मेरा ये कहना है बड़ा सिंपल, आप ब्रांच ऑडिटर जब बनना, पहले साल जब आपको ब्रांच ऑडिटर बनना है किसी भी बैंक में तो मुश्किल है। एक बार आप ब्रांच ऑडिटर बन गए, उसके बाद 4 साल तक तो वो आपको डाइवोर्स नहीं दे सकता, कुछ भी कर ले, 4 साल तक आपको टच नहीं कर सकता बैंक। तो फिर किस बात की घबराहट है मुझे? Why should I worry about this particular part? Because they have also appointed you for a period of 4 years. Let's be very clear about it. Unless something about performance or something about other things come up, not because of this performance of MOCs being given. MOC के बेसिस पे आपको कोई नहीं निकाल सकता किसी भी सूरत में, तो MOC देने से मत घबराइए प्लीज। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई ब्रांच ऑडिट शुरू करने से पहले कम से कम एक काम जरूर करें, प्लानिंग करनी जरूरी है। ऐसे 300 है, ऐसे 300 पढ़िए, आपने प्लानिंग करनी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। मुश्किल ये इसके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की तो हम परवाह नहीं करते, और वो हमें मैंडेटरी है, पर हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की परवाह नहीं करते। ऐसे 300 के में ये कहता है कि आपने अपने ऑडिट को प्लान करना है। आप ऑडिट को प्लान कब करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि मेरी ब्रांच किस तरीके की है, मेरी ब्रांच का स्वरूप क्या है, मेरी ब्रांच एडवांस ओरिएंटेड है, मेरी ब्रांच डिपॉजिट ओरिएंटेड है। एडवांस ओरिएंटेड है तो उसमें फंड बेस्ड एडवांसेस ज्यादा हैं या नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस ज्यादा हैं? फंड बेस्ड एडवांसेस ज्यादा हैं तो कैश क्रेडिट अकाउंट ज्यादा हैं, टर्म लोन्स ज्यादा हैं। टर्म लोन्स ज्यादा हैं तो उसमें व्हीकल लोन ज्यादा है, होम लोन्स ज्यादा है, इंडस्ट्री के लोन ज्यादा है। कौन से लोन ज्यादा? अगर डिमांड लोन ही है, मैं आ रहा हूं उसकी सिग्निफिकेंस पे आ रहा हूं। एक ऐसे 315 है जो ये कहता है कि आपने रिस्क असेस करना अपने ऑडिट का। हमने वो आप रिस्क असेस कैसे करोगे ऑडिट का? अगर आपको ये पता होगा कि आपका क्लाइंट है क्या चीज। मैं अगर एक ट्रेडिंग का क्लाइंट है, अगर ट्रेडर है एक क्लाइंट और उसका आपने ऑडिट करना, तो उसमें तो आपने अगर क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन कर लिया ना आइटम्स का, जो परचेज की और जो सेल की और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा या ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद आपका रिस्क बहुत कम हो जाता। मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें तो बहुत कुछ देखना, आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का बहुत बड़ा रोल हो जाता, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का वैल्यूएशन में बहुत बड़ा रोल हो जाता। तो नेचर ऑफ रिस्क बिकम्स डिफरेंट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्लाइंट। तो व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच, आपका रिस्क असेसमेंट, उसका मिटिगेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर किसी ब्रांच में डिमांड लोन्स ही हैं कि उन्होंने लोन्स किसके दिया हुआ, अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन्स अगेंस्ट किसान विकास पत्र, लोन अगेंस्ट इंदिरा विकास पत्र, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसीज, तो क्या रिस्क है? उसमें ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोग्राम में सिर्फ यही देखना है, as per the policy of the bank, as per the procedure laid down by the bank, वो हुआ या नहीं हुआ, और किसी केस में मार्जिन एक्सीड तो नहीं हो गया। अगर आपके पास एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है तो वो अकाउंट NPA नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, तो उसमें NPA की बात ही नहीं रहती, किसी इंटरेस्ट रिवर्सल की बात नहीं रहती। परंतु अगर आपका यही कैश क्रेडिट का लोन हो, सारा रिस्क डिफरेंट है,
वहां तो आपको स्टॉक रिटर्न्स देखनी है, डेटर्स के रिटर्न्स देखनी है, क्रेडिटर्स के रिटर्न्स देखनी है, फिर ये देखना कि जो स्टॉक रिटर्न्स वो दे रहा है वो ठीक भी दे रहा है या नहीं दे रहा। कोई ऐसी स्टॉक रिटर्न तो नहीं है। अगर स्टॉक रिटर्न 6 महीने से पुरानी और डीपी उसके अगेंस्ट दे रखी है, देन द अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। क्या स्टॉक स्टेटमेंट्स किताबों में से है या हवा में से है, उसके लिए क्या चेक करना। इस साल की तो बैलेंस शीट आपके पास है नहीं, पिछले साल की बैलेंस शीट आपके पास है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट को आपको लास्ट ईयर की स्टॉक रिटर्न्स और डेटर रिटर्न्स और क्रेडिटर रिटर्न्स के साथ कंपेयर करके ये निकालना है कि वो बुक्स के साथ टैली करती थी या नहीं टैली करती थी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिलता क्या है कि अगर आप पिछले साल की स्टॉक रिटर्न को उसकी बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज कीजिए जो उसने स्टॉक रिटर्न मार्च की दी है, मार्च 22 की दी है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे 31 मार्च की बैलेंस शीट के साथ, तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक तो आधे थे ऑडिटेड बैलेंस शीट में कंपेयर टू द रिटर्न दैट ही हैड फाइल्ड विद मी, डेटर्स भी आधे थे, क्रेडिटर्स 3 गुना थे, तो डीपी नहीं निकलेगी किसी भी सूरत में, देन द अकाउंट विल हैव टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। पर अगर कोई ऐसा केस आपको मिले तो 1 साल और पीछे चले जाइए, उसको भी कंपेयर कर लीजिए, और अगर उसमें भी यही मिले तो उस डेट से उस अकाउंट को एनपीए करते हुए इस बार ले आना, और उसको डाउटफुल में दिखाना या जिसमें मर्जी दिखाना। तो मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैश क्रेडिट अगर अकाउंट है तो उसका रिस्क बिल्कुल डिफरेंट है आपका। कैश क्रेडिट अकाउंट में आपको ऑपरेशन भी देखनी पड़ेगी अकाउंट की, कैसे ऐसे आपको कैश क्रेडिट के अकाउंट मिल जाएंगे जिसमें कि 8 ही एंट्रीज पड़ती हैं साल की, 4 बार कैश इंटरेस्ट डेबिट होता और 4 बार इंटरेस्ट रिसीव होता। कैश क्रेडिट अकाउंट कोई टर्म लोन नहीं है, कोई फिक्स्ड लोन नहीं है कि आपने दिया और सिर्फ उसका इंटरेस्ट रिकवर होना। तो उस केस में तो आपको जाके देखना पड़ेगा जब पहली बार इसको कैश क्रेडिट दिया था तो उसने यूज कहाँ पे किया, हो सकता है पैसा डाइवर्ट कर दिया प्रॉपर्टी वगैरह में, बिल्कुल रिस्क डिफरेंट हो गया आपका। कैश क्रेडिट का अकाउंट है तो आपको ये देखना है कि अगर उसकी लिमिट 1 करोड़ की है तो कम से कम 3 करोड़ के तो उसके कम से कम क्रेडिट आने चाहिए किताबों में। अगर 3 करोड़ के क्रेडिट नहीं आए तो अकाउंट ठीक नहीं है, होने तो 4 टाइम चाहिए, पर मैं कहता हूं 3 टाइम तो कम से कम हो। अगर किसी कैश क्रेडिट अकाउंट में करंट रेशियो 1:1 से कम है तो वो अकाउंट जाने वाला है। तो पूरी प्रोसेस आपकी बदल गई ना। टर्म लोन है तो टर्म लोन में आपने क्या देखना, टर्म लोन में आपने देखना है कि भाई जिस पार्टी से आपकी एसेट एक्वायर हुई है, जिस पर्पस के लिए आपने टर्म लोन दिया था, बैंक ने पेमेंट डायरेक्टली उसी पार्टी को की है, इस पार्ट बारोवर के कैश क्रेडिट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट करके इससे पेमेंट करवाई है, वो नहीं हो सकता। जब कभी भी टर्म लोन होगा तो बैंक वाला सीधी पेमेंट सप्लायर को करेगा, और अगर बैंक वाला पेमेंट को क्रेडिट करता कैश क्रेडिट अकाउंट या उसके करंट अकाउंट को, फिर उसमें चेक बहुत बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि फिर उसमें डाइवर्जन का चांस बहुत ज्यादा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे नेचर ऑफ लोन बदलेगा वैसे वैसे स्वरूप बदल जाएगा ब्रांच का, और वैसे वैसे आपकी चेकिंग का स्वरूप बदल जाएगा, वैसे वैसे आपकी ऑडिट प्लानिंग बदल जाएगी। अगर आपके नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस ज्यादा हैं कि भाई गारंटी दी हुई है, आपके एलसीज दे रखी हैं, तो उस पर तो कमीशन इनकम आनी है, इंटरेस्ट इनकम नहीं आनी, उसमें आपकी जो चेकिंग है रेवेन्यू की वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। और फिर उसमें आपने ये देखना है कि भाई यूजेंस एलसी है, साइट एलसी है, अगर आपकी इन एलसीज के बेस पे आपने कुछ दे रखा है, सपोज कीजिए एक एलसी है, उसके बेस पे उसने माल परचेज कर लिया, यूजेंस एलसी है,
तो यूजर एलसी की पेमेंट तो आज नहीं होगी किसी भी सूरत में, माल आ जाएगा, परंतु वो माल अगर वो स्टॉक रिटर्न में देता है तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पेमेंट बैंक ने कर रखी है, पार्टी ने नहीं की अभी। उतना पैसा, उतने के स्टॉक्स आपको घटाने पड़ेंगे स्टॉक रिटर्न से। अब ये कब पता लगेगा? जब आप बैंक में पूछेंगे कि आपके एडवांसेस हैं किस नेचर के, और अगर एलसीज हैं तो फिर आपको, अगर मेनली एलसीज आप इशू करते हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एलसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक ठाक है, और दूसरा ये कि कोई एलसी डिवॉल्व तो नहीं हो रही है। अगर फ्रीक्वेंटली डिवॉल्व हो रही है एलसी तो आपको लॉन्ग फॉर्म में तो रिपोर्ट करना ही है, उस पर आपको गौर भी करना पड़ेगा कि ये डिवॉल्व क्यों हो रही है, उसकी चेकिंग आपको ज्यादा तरीके से करनी पड़ेगी। गारंटीज आपने दे रखी हैं पार्टीज के बिहाफ पे, ज्यादा आप गारंटीज देते हैं उससे आपको गारंटी कमीशन मिलती है, तो फिर आपको ये पूछना पड़ेगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी कि कोई गारंटी इन्वोक तो नहीं हो रखी है आपकी जो आपने अकाउंट फॉर ना कर रखी हो, या आप ये कह रहे हो कि हमने तो डिस्प्यूट कर रखी है, उसका जिक्र आएगा कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट्स में। घोष जिलानी कमेटी रिपोर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या बैंक ने सारी जो जॉब्स हैं, जो सेंसिटिव पोस्ट हैं, उस पे जॉब्स रोटेट कर रखी हैं? एक ही व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ पिछले 5 साल से उस सीट के ऊपर। आप आंसर करके आते हैं यस इट इज बीइंग रोटेटेड। अरे अगर रोटेट होता तो नीरव मोदी नहीं होता, वो बंदा उस सीट पे 8 साल तक बैठा रहा। सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपका सारा स्वरूप बदल जाता। मेक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट and to an extent Ghosh Jalani committee report as a part of your audit program if you want to do a qualitative job. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट और घोष जलानी कमेटी रिपोर्ट होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अगर आप लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के सारे पॉइंट अच्छी तरह से चेक कर लें और सिर्फ यस और नो में आंसर ना कर रहे हो तो आपकी रिपोर्ट तो अपने आप ही क्वालिटेटिव हो जाएगी। उसमें क्योंकि एडवांसेस के ऊपर भी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और बाकी चीजों पर भी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आईटी के ऊपर भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो मैं सिस्टम्स की बात कर रहा था। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो एक बात आपको जरूर कहना चाह रहा हूं, और ये पहली बार बोल के जा रहा हूं किसी सेमिनार में, एक सेमिनार में मैंने और बोली। हर बैंक में एक आईटी पॉलिसी है। आईटी पॉलिसी के तहत आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह खरीदते भी हैं और स्क्रैप भी करते हैं। ब्रांच में जाके ये पूछिए कि इस साल में आपने कोई कंप्यूटर स्क्रैप किए, एक बार पूछेगा जरूर। ये एक नया पॉइंट दे रहा हूं आपको इस बार। ब्रांच में जाके ये जरूर पूछिए कि आपने कोई कंप्यूटर स्क्रैप किए क्या इस साल, और स्क्रैप किए तो क्या किया उनका। अगर वो ये कहता है कि हमने तो कंप्यूटर भेज दिया, कंप्यूटर भेजना ठीक है पॉलिसी के तहत है, परंतु पॉलिसी ये कहती है कि हार्ड डिस्क आपको रिमूव करनी है उसकी, हार्ड डिस्क नहीं आप भेज सकते उसकी, क्योंकि हार्ड डिस्क इज नथिंग बट द डेटा, और हार्ड डिस्क को आप मैन्युअली डिस्ट्रॉय करते हैं। हार्ड डिस्क को आप बाहर वाले को नहीं कहते कि स्क्रैप करो, हार्ड डिस्क को आप बाहर वाले को नहीं कहते डिस्ट्रॉय करो, हार्ड डिस्क को आप मैन्युअली डिस्ट्रॉय करेंगे। किसने डिस्ट्रॉय की, किसकी प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हुई, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये एक नया पॉइंट है इस साल में आपको जो मैंने दिया। सर, आई वुड लाइक टू रिप्लाई सर इस पॉइंट पे।
सर लास्ट ईयर जैसे ऑडिट में मैंने पूछा था, तो वो तो बोलते हैं आईटी से लोग आते हैं, आईटी टीम से, और वो ले जाते हैं, हम लोग का उसमें कोई रोल नहीं होता मतलब ही नहीं है कोई। अच्छा। उन्हें कहिए कि रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि कौन लेके गया, आईटी टीम का कौन सा बंदा आया था। अच्छा, मेरे को याद है, बोले इंडेंट हम लोग रेस करते हैं, वहां से फिर आदमी आता है और वो उसको सॉल्व करता है, हम लोग का तो रोल नहीं मैं है। जो स्क्रैप की बात कर रहा हूँ, हाँ, रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिशिएंसी रिमूवल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सिस्टम आईटी का रिमूवल। बंदा आके उसको रेक्टिफाई कर सकता है डेफिशिएंसी को, परंतु जब आप कंप्यूटर को स्क्रैप करेंगे तो या तो उनकी पॉलिसियों को भी सेंट्रलाइज्ड लेवल पे उन्होंने स्क्रैप करना, फिर तो वो लेके जाएगा। अगर उनकी बैंक की पॉलिसी, उन्हें कही बैंक की पॉलिसी दिखा दीजिए। अगर बैंक की पॉलिसी ये है कि ब्रांच लेवल पे स्क्रैप होना है, तो फिर आईटी टीम कहां से आ गई पिक्चर में? राइट सर, थैंक यू। सो दिस इज अ न्यू पॉइंट दैट आई एम गिविंग यू दिस ईयर। और जो ऐसे 315 वाला पॉइंट है वो भी मैंने पहली बार दिया आपको। मेरा अपना मानना यह है कि कहीं ना कहीं पे वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन। और दूसरी बात, आप क्वालिटेटिवली एक काम कर सकते हैं, एक किसी भी ब्रांच का ऑडिट टाइम पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो बैंक ऑडिट क्या है। और बैंक ऑडिट क्या का क्या मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम क्या है। जितने भी बैंक, हर बैंक में, हर ब्रांच में पहले मैन्युअली रिटर्न्स जनरेट होती थी, अब ऑटोमेटेड रिटर्न्स जनरेट होती है। वो रिटर्न्स इरेगुलर एडवांसेस की भी हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2, और एनपीए अकाउंट्स की भी हैं, लॉस एसेट्स की भी हैं। वो रिटर्न पे आउट और ले लॉस की भी हैं। वो रिटर्न्स एलसी डिवॉल्व की भी हैं। वो रिटर्न्स गारंटी इन्वोक्ड की भी हैं। वो रिटर्न्स बिल डिसऑनर्ड की भी हैं। अगर आपको ये मालूम है कि ये सब रिटर्न्स जनरेट होती हैं, तो आप लेजर से ऑडिट क्यों करना चाहते हैं? डू दी ऑडिट थ्रू दी रिटर्न्स ना। 31 मार्च को कौन सा अकाउंट एनपीए हो सकता है जिसके 90 दिन पूरे हो चुके होंगे? जो अकाउंट 31 दिसंबर को इरेगुलर नहीं है, SMA 0, SMA 1, SMA 2 में नहीं है, वो अकाउंट जनरली एनपीए नहीं होगा, क्योंकि उसके 90 दिन पूरे नहीं है। हाँ, अगर वो अकाउंट ऐसा है कि 31 मार्च को स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई थी 6 महीने तक, तो एनपीए कर दिया, क्योंकि 31 दिसंबर में वो इरेगुलर एडवांस में नहीं आएगा। या किसी अकाउंट में फ्रॉड हो गया तो 31 दिसंबर को इरेगुलर नहीं होगा, परंतु 1 जनवरी के बाद अगर उसमें फ्रॉड हुआ तो वो अकाउंट स्टिल एनपीए हो जाएगा, वो तो सीधा डाउटफुल में जाएगा। कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें रिन्यूअल की 6 महीने पूरे हो गए एज ऑन 31 मार्च, और उसको उस बेसिस पे उसको एनपीए करना पड़ा, वो अकाउंट इरेगुलर में नहीं आएगा एज ऑन 31 दिसंबर। पर हाँ, रिन्यूअल ओवरड्यू में जरूर आ जाएगा। उसके भी रिटर्न जाती है कि कितने केसेस में रिन्यूअल ओवरड्यू है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सपोज कीजिए आपके 30 अकाउंट थे जो SMA 0, SMA 1, SMA 2 में थे, तो भाई ये 30 अकाउंट्स में ज्यादा डेंजर है कि ये एनपीए होने वाले हैं। तो 31 दिसंबर के जो SMA 0, SMA 1, SMA 2 के अकाउंट्स हैं, उनको उठवा लीजिए, उनको दिखवा लीजिए। उसमें से जो ऑलरेडी एनपीए हो गए 31 मार्च को, वो छोड़ दीजिए। सपोज कीजिए इसमें से 10 अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, बाकी जो 20 अकाउंट हैं उनको चेक करिए अच्छी तरह से कि ये रेगुलराइज कैसे हुए, ये एनपीए होने से कैसे बचे। अगर वो बचे इसलिए कि टर्म लोन इरेगुलर था और मैंने कैश क्रेडिट अकाउंट को अपना ओवरड्रॉ करके उसमें से पैसा ट्रांसफर कर दिया, नहीं कर सकता, एमओसी बन गया आपका पहले दिन। या मैंने उसको कभी बिल्स की फैसिलिटी नहीं दी थी, मैंने उसके बिल डिस्काउंट करके उसको पैसा दे दिया और उसमें ट्रांसफर कर दिया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर वेरी क्लियर, बैंक कैन नॉट क्लियर द इरेगुलरिटी आउट ऑफ इट्स ओन फंड्स। अकाउंट को
एनपीए कर देना। हाँ, कैश क्रेडिट अकाउंट है उसका 1 करोड़ का, डीपी 1 करोड़ की है, अवेल उसने 80 लाख का रखी, तो 20 लाख तक का वो पैसा ट्रांसफर कहीं पे भी कर सकता है सिवा फिक्स डिपॉजिट बनवाने का। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट बनवा रहा तो इट इज मोर ऑफ अ विंडो ड्रेसिंग। अगर 2 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट बनती है फिर क्रेडिट हो जाती है कैश क्रेडिट को। क्योंकि कैश क्रेडिट अकाउंट इसलिए नहीं है कि आप फिक्स डिपॉजिट बनवाएं, कैश क्रेडिट इसलिए है कि बैंक के ऑपरेशन के बिजनेस के ऑपरेशन चलते रहने चाहिए। तो भाई अगर ये सब चीजें आपके पास हैं, गारंटी इन्वोक्ड आपके पास है, एलसी डिवॉल्व आपके पास है, ये सब के रिटर्न्स हैं आपके पास। जिन जिन केसेस में गारंटी जो आपने रिटर्न ली, ये रिटर्न तो आप 31 मार्च की भी ले सकते हैं कि गारंटी इज इन्वोक्ड एंड पेड, गारंटी एलसी डिवॉल्व एंड पेड, इनकी रिटर्न ले लीजिए और फिर देखिए कि एलसी डिवॉल्व किस दिन हुई थी या गारंटी इन्वोक और पे किस दिन हुई थी। जिस दिन पे हुई है या जिस दिन डिवॉल्व होकर पे हुई है एलसी, उस दिन उसके कैश क्रेडिट में क्या बैलेंस था उसको मर्ज कर लीजिए दोनों बैलेंसेस को, और फिर देखिए कि अमाउंट ओवरड्रॉन कितने दिन तक चला। क्योंकि आप कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करके एलसी डिवॉल्व कंट्रोल अकाउंट या एलसी गारंटी इन्वोक कंट्रोल अकाउंट करके अलग से उसको सेपरेटली इरेगुलरिटी में नहीं रख सकते। You will have to combine the two figures and then find out whether the account has been overdrawn or not for a period of 90 days. ये सब चीजें हम देख सकते हैं, हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम मेंटली तैयार हैं इसके लिए। पिछले साल 2 साल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम वेरी टफ इन द सेंस, उन्होंने ये कहा कि आप किसी बैंक में ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं मिलना चाहिए, सिस्टम के अंदर ये फीड होना चाहिए कि अगर कोई लोन आपने दिया तो उसकी रीपेमेंट ड्यू डेट्स कब कब की है, और अगर ईएमआई है तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना कितना कंपोनेंट है। अगर आपने और हर ब्रांच में हर रोज डेली एंड ऑपरेशन करना है और उसमें SMA 0, SMA 1, SMA 2 की रिटर्न निकालनी है, एनपीए की रिटर्न निकालनी है। उन्होंने पहले क्या होता था कि कैश क्रेडिट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हम देखते थे एज एट द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि वर्डिंग जैसी एज एट द बैलेंस शीट डेट। अब उन्होंने वो वर्डिंग निकाल दिया एज एट द एंड, एज एट द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब यह है कि जो आपका सिस्टम है वो थ्रू आउट द ईयर ये देखेगा कि अगर कहीं पे भी 90 दिन से ऊपर इरेगुलरिटी हो जाती है, अमाउंट ओवरड्रॉन रहता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डीपी और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनीथिंग एल्स, देन द अकाउंट विल बिकम एनपीए ऑन दैट डेट। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे अकाउंट एनपीए नहीं होगा। अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू थी 15 मार्च को, तो 15 मार्च से आप 90 दिन कैलकुलेट करेंगे और फिर आप कहेंगे कि उस दिन अकाउंट एनपीए हुआ। अगर अब आपको जो स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस दिया जाता है और उसमें एनपीए डेट्स दिखाई जाती है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये सिस्टम के थ्रू रिटर्न्स नहीं निकल रही हैं। अब तो आनी चाहिए, कोई डेट 9 तारीख होगी, कोई 15 होगी एनपीए की, कोई 20 होगी, कोई 25 होगी, कोई 27 होगी, कोई 10 होगी। क्योंकि जिस डेट को ड्यू था और उस फिर 90 दिन पूरे हुए, और अगर सिस्टम इस तरीके से काम नहीं कर रहा तो रिपोर्ट कर दीजिए, बिकॉज देन इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा इज डाउटफुल। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पहले जो अकाउंट एनपीए होता, एक फैसिलिटी एनपीए होती थी कि आपकी कैश क्रेडिट फैसिलिटी एनपीए हुई तो टर्म लोन भी एनपीए हो गया, बिल वाला भी एनपीए हो गया। और अगर आपने इस अकाउंट को पूरे को एनपीए से निकालना है तो आप सपोज कीजिए कैश क्रेडिट अकाउंट में जो इरेगुलर हुआ था उसकी इरेगुलरिटी दूर कर देते थे। बट इन द मीन टाइम सपोज कीजिए आपने एनपीए जनरेट किया 31 मार्च को और आपका पैसा कैश क्रेडिट में इरेगुलरिटी दूर करने का आ गया 30 अप्रैल तक, तो आप 30 अप्रैल को कहते थे अकाउंट परफॉर्मिंग हो गया। अब वो कहते हैं नहीं भाई अभी रुको,
अगर 30 अप्रैल तक कोई टर्म लोन में या बिल में अमाउंट ओवरड्यू हो गया, जब तक वो क्लियर नहीं करोगे तब तक अकाउंट परफॉर्मिंग नहीं होगा। किसी भी अकाउंट को एनपीए से बाहर निकालने के लिए ये जरूरी है कि उसकी सब फैसिलिटीज में किसी तरीके का एक पैसे का भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। अगर वो ओवरड्यू है, then the account will be termed considered as NPA only. आप रीस्ट्रक्चरिंग करते थे, रीस्ट्रक्चरिंग में स्पेसिफाइड पीरियड होता था 1 साल का। आप कहते थे भाई इस साल में इसने पूरी पेमेंट कर दी जितनी ड्यू थी, आप उसको अपग्रेड कर देते थे 1 साल के बाद, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड होता था। अब उन्होंने ये कहा कि आप अपग्रेड तो करोगे, पर तब करोगे अगर इस पूरे 1 साल में किसी भी दिन इस अकाउंट में किसी तरीके का एक भी पैसा ओवरड्यू नहीं था। सवाल पूरे साल का नहीं कि पूरे साल में जो ड्यू था वो दे दिया या नहीं दे दिया। सवाल यह है कि कोई ऐसा दिन था जब अमाउंट ओवरड्यू था और इसने नहीं दिया, और अगर कोई ऐसा पीरियड था तो वो फिर ये नहीं माना जाएगा कि अकाउंट कैन बी अपग्रेडेड। एमएसएमई के केस में उन्होंने ये पीरियड 30 दिन का कर दिया, 1 दिन के बजाय। What I am trying to tell you is that Reserve Bank of India is toying with the idea कि भाई बैंक्स की लाइफ को और हमारी लाइफ को कितना मुश्किल किया जा सकता। अब ये सब चीजें सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड होंगी क्या? क्योंकि आरबीआई तो कह रहा है सिस्टम के थ्रू ही एनपीए निकलेगा। तो आप जाके देखिएगा कि कैश क्रेडिट का जो आउट ऑफ ऑर्डर है वो 90 दिन निकालता है क्या सिस्टम? नहीं निकालता थ्रू आउट द ईयर। अब स्टॉक स्टेटमेंट को कैसे कंपेयर करेगा वो बैलेंस शीट के साथ? कर ही नहीं सकता, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन जरूरी है। रिन्यूअल्स ड्यू की डेट ही गलत फीड होती है सिस्टम के अंदर, तो ब्रांच लेवल पे जाके ब्रांच ऑडिटर करेगा उसको, तो सेट, नहीं तो सेट ही नहीं हो सकता। अजय जैन जी आ गए क्या? अजय जी आ चुके क्या? जी सर, मैं चेक कर रहा हूँ। अगर अजय जी आ चुके हैं, सर ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन कर लिया है, हाँ, then sir. I will like to stop here. Then I will like to stop here because all other things are to be covered by him. ये जो मैंने भी बल्कि कवर किया, कई उसमें से वो भी एस्पेक्ट कवर करेंगे। तो मैं यहीं रुकूंगा। मेरे लिए किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिए। जी सर। कोई हाथ खड़ा करे और आप उसको उनको अनम्यूट कर दीजिएगा और वो अपना क्वेश्चन पूछ लें। वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है जी। आई हैव जस्ट enabled chat and unmute for the audience. So अगर किसी का ऑडियंस का क्वेश्चन है तो they can just unmute themselves and now speak to the sir, or they can put it in the chat box. And I am so glad to see 250 people joining this program. It is really great. नमस्कार सर, संदीप सावरिया है। नमस्कार सर, वन क्वेश्चन सर, एक थोड़ा सा हमें इनलाइटन कीजिए ना रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट्स, कैसे अपग्रेडेशन हो सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट्स में? वो अजय जी आपसे बात करेंगे पूरी की पूरी, इसलिए मैंने उस पर टच नहीं किया। अजय जी इज गोइंग टू टेक अप द रीस्ट्रक्चरिंग। ओके सर, थैंक यू। पर रीस्ट्रक्चरिंग में एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो अकाउंट अपग्रेड नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जरूरी रीस्ट्रक्चरिंग में अपग्रेडेशन में ये है, पहली बात तो उन्होंने ये कहा जो मैंने अभी आपको बताया, एक भी दिन स्पेसिफाइड पीरियड में अकाउंट किसी भी सूरत में ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन ओवरड्यू हो गया तो वो अपग्रेड नहीं हो सकता स्पेसिफाइड पीरियड के बाद भी अकाउंट। तो और दूसरी बात, अगर उसने कैपिटल लानी है, कैपिटल अभी लाया नहीं, आपने अपग्रेड कर दिया, ये नहीं हो सकता। जब तक सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगी तब तक अपग्रेड नहीं होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन है
अगर आपकी कमेंसमेंट ही नहीं हो रही प्रोडक्शन की, तो आप अपग्रेड कैसे होंगे अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कर भी दिया गया तो। ये सब चीजें जो हैं ऑफ कोर्स आपसे चर्चा करेंगे अजय जी, बट माय ड्यूटी वाज टू टेल यू कि रीस्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द एरिया, और रीस्ट्रक्चरिंग में हमेशा मैनुअल इंटरवेंशन रहेगी, इट विल नॉट बी थ्रू द सिस्टम, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। तो वो एक इशू रहेगा ही रहेगा आपके साथ हमेशा रीस्ट्रक्चरिंग में, पर उसमें फिर एडिट लॉग होना चाहिए आपके पास हर सूरत में। ओके, हेलो, ओके, थैंक यू सर। Ji sir, we have So, any sir- questions in chat box? The chat box is open. I'll request participants to put it there. I think sir last में एक साथ ले लेंगे फिर होगा। ठीक है, फिर वो अजय जी आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। जी यहाँ पर ये अजय है जी, कि are you there? Can you please members के पास कोई unmute yourself? नहीं। Amarjit sir, you will be there with us, na? नहीं, मैं निकल जाऊंगा अब। 1 second, sir. Before that, just a small formality. फॉर्मेलिटीज छोड़ दो हमारे साथ यार, आप फॉर्मेलिटीज मत करो। Pratik, can you give me the share right? So Yes, sir. I welcome Jain sir to this webinar being attended by Yes, more Sanjeev. than 250 people. Amarjit ji, namaskar sir. It's very thank you for joining with us with the Center Kolkata, and it's a small token of e-memento for your e-library, and hopefully we will send it to you through WhatsApp and email. And thanks a lot, sir, for inviting I'm us. so happy that it is e-memento and it will go into the diary rather than going into the office. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot, Nitish. And I think Nitesh ji dropped thanks a out lot, accidentally. Pratik ji and Hari Ram ji. Okay. Thank you, sir. So, Thank Thank you, sir. Thank you. Ajay ji, take over from here. Ji, Thank sir. you, sir. It will do. Thank you, Amarjit sir. Thank you. Warm welcome to our study circle. We are very happy to have you today with us. And as the protocol demands, on your request, we'll give a brief profile for Ajay Jain ji. Ajay Kumar Jain ji is in practice since 1986. He's having a wide experience of central statutory audit, bank branch audit, and other audit assignments. Sir has been member of committee to review performance of corporate as regards governance. He was appointed by the Government of India to investigate complex issues in relation to. I'm sorry. I am sorry. It is wrongly somebody else profile you are reading. Let simply. I am having very wide experience of bank audit and all type of things. Let us continue that. Let us Fine, sir. Fine, sir. So over to you, sir. Thank you. First of all, I am thankful to CPE Study Circle with regard to invitation to me for this program, and the members are in the program in such a big numbers. Chopra sir has already covered a lot of things in brief. Let me go to all the clarification, then detailed discussion on these topics. Can you share me the admin rights to share my screen? Yes, sir. You can share your screen, sir. It's already there enabled. Okay, thank you. Yes, we can see your screen, sir. Okay. The member will be surprised why I am starting my presentation only for LFAR. There was a time when we used to fill this form at the end of the audit. But now we have to use this format in the start of the audit itself. Because it is a complete audit program, we have to bifurcate the asset, liabilities, income, expenditure, and all these areas. And
advances to the respective staff while doing the audit, so that we can complete the audit according to the expectation of the Reserve Bank of India. There was a time when in long form audit report, we generally used to write some few words, nil, not applicable, and we have not come across the cases. I think that time has gone long back. Now the RBI has asked to give the specific answers, what we have done or not. They have taken a confirmation that have you verified this? In some cases, they have added some very good points in this format so that we can remember what we have to verify. IRAC norm circular has been completely pasted in this format and they have asked to confirm it. In many places, it is mentioned we need the audit trails. We need the data from the IT department of the bank. So I request the members, we should read this format in detail first, and then we should reach to the conclusion what we need from the bank, so that we can write to them on the very first day that, sir, we need these details, keep ready when we start the audit. Because at the end, if we'll write that these details are not available, hence we are not able to comment on this, I think that will not be justified. Because they will simply ask, you have not asked the details, how we can give you? So first of all, we know what we need. This is one. Second, we cannot use this line that the details were asked for and not provided everywhere. Because audit trail basically is a device through which we can do the audit early. But in large advances, they have asked to verify specific details. So these details can be verified from the system itself. So how we should do and what we should do, that we'll discuss in detail. Our communication with the bank is very important. Now let us come to some important points of the long form audit report. Cash. In cash, there is a word ATM is mentioned. Rupee, these clauses are applicable to rupee currency, foreign currency, all type of cash, and ATM also. Normally what happens when we go for the audit, there is only 1 or 2 ATMs are attached to the branch and banks, and bank asks us to verify the physical verification and give a report on that. So that we normally do. But problem comes with the branches. Suppose I get a branch which is a currency test branch in the town, and that branch is feeding around more than 200 or 250 ATMs in the city. So in one branch, I got that type of branch. So what we have to verify in this? Then I asked the branch to provide me the physical verification report of all 250 odd ATMs, which you have conducted during the month of the March. So we should verify these reports. We should see these reports have been signed by both the custodians with the details of denomination and amount what they have verified. Number one. Along with this report, they will staple one token slip which they have generated at the time of physical verification from ATM machine. And that will be attached. That a physical cash should tally with this slip. Number one. Now, one more thing we have to check. We should see physical cash is tallied with this token slip signed by the bank staff, both the custodian. And third one, we should see the time, at what time and which date they have done physical verification. That balance should also tally with the GL on that day. So that we should do. All these three is okay, fine. If there are differences, then we should give details in my long form audit report. These are the differences, but we should see whether these differences have been rectified and entries have been passed before 31st of March or by 31st of March. If not, then give a suitable comment in long form audit report about these differences and say these entries have not been corrected. Now, next point comes very important in this long form audit report. Whatever we are reporting in the long form audit report, we should take care of if any entry, any comment leads to MOC, we should give MOC also simultaneously. If we feel there is a loss of cash or cash shortage, then it has to be accounted for. So this point we should take care in the cash. Next comes
balance with Reserve Bank of India and any other banks. Suppose you are in Calcutta. In Calcutta, normally the clearing is being handled by CPCs or RPC. So branches are not handling this. So branches will not be normally having the account with any other bank or the Bank of India. Suppose we get the branch in the remote area, or if the branch is having the account with any other bank, we should see the reconciliation. Why the entries are pending in reconciliation? What are the old entries is there? Whether these entries leads to any MOC, what we need, amount is not recoverable, debit entries are lying, expenses debited by the clearing house or the other branches, but we have not accounted for in our books of accounts. So that can lead to the MOC. But one more point is there, important point. To which branch it is applicable? It is mentioned in the very first line, where the branch maintains an account with Reserve Bank of India. This clause is applicable to the branch which is maintaining account with Reserve Bank of India. So how it works, this clause basically. Suppose in Calcutta, one bank is having, suppose 10 currency chest branches, which are handling a cash of currency chest. Who is the owner of the currency chest? Reserve Bank of India. So bank is having surplus cash of 2 crore rupees. What the branch will do? Cash credit and debit to Reserve Bank of India. And they will put this 2 crore rupees in the currency chest room. Owner is Reserve Bank of India. Like this, there are 10 currency chests. They are depositing the money in the currency chest and withdrawing the money from the currency chest. Their duty is to report this transaction on day-to-day basis to Reserve Bank of India. But surprisingly, these 10 branches are not having the account with Reserve Bank of India. But the intimation has to go, an amount should be debited or credited to Reserve Bank of India as applicable. How this process works? One branch is having account with Reserve Bank of India. Say the journal office branch is having account with Reserve Bank of India. These all currency chest branch will debit or credit to Reserve Bank of India through inter-branch to journal office. They will give credit to cash and debit to journal office branch through inter-branch with the instruction, so much money has been debited, so deposited in currency chest today. Now it is the duty of that journal office branch to respond all these entries. My branch has raised debit. What they should do, they should give debit to Reserve Bank of India because they are maintaining account with Reserve Bank of India, and credit to my branch through inter-branch. Inter-branch entry will be knocked off and the amount will be debited and credited to Reserve Bank of India at journal office. And in this manner, the correct balance of Reserve Bank of India in the books of the journal office accounts will be correctly reflected. Now, what happens basically? Not only 10, there are so many currency chest branches are connected with this journal of office RBI account. Every branch is intimating daily basis, so much cash deposited, so much is withdrawn. So there are the chances on 31st of March till 31st of March, many entries which has been raised by other branches have not been responded by journal office branch. It means the RBI balance is not correctly reflected. These entries are pending responding as on 31st of March. Now the auditor of the journal office branch has to see how many such entries are there pending in inter-branch, which should have been debited and or credited to Reserve Bank of India up to 31st of March. Only after that the correct balance will be reflected. If entries are there, auditor will report in long form audit report, these many entries are pending, and simultaneously give MOC to represent the correct balance with Reserve Bank of India as on 31st of March. Now point comes how the auditor will get that data. In all the banks, in all the branches, inter-branch reconciliation is being done on day-to-day basis. Every day, next morning, every day morning, branch manager is having one report on its desktop, how many entries which have been raised on the branch, but pending for responding by them at the end of the previous day. What is that list? So we should ask that list from the branch. 1st April dated morning, when we will get in that detail, we will find how many entries which have been raised by other branches on my branch, but my branch has not responded. So please pick up the data from that, report it here and give MOC also.
I'm telling you, this report is available in each and every branch. Name may be differ from bank to bank. Similarly, this report will give you the data relating to one more clause is there. Interbranch accounts are reconciled or not, and entries are pending for responding. So we can get the data from that and give MOC. Next point will come, then I will discuss at that time. Next comes advances. Now in this long form audit report, there are some points where the meaning of the word is very wide, but it is not defined by Reserve Bank of India to what extent we should check it. The point is this, the drafting of this report is very important. We should look into that. We should draft report in such a manner. We have to save our skin also. Wherever there are many words like anti-money laundering, like integrity of the data. Same way here is the one word is there is a transaction audit. The meaning is very wide. Wherever we feel it, the situation is like this, we should clearly spell out in the report the scope limitation. To what extent we have verified, on what basis we have given our comments. Here, the limit of the threshold limit of the large advances is defined. It is 10% of fund-based and non-fund-based portfolio, the bank, or 10 crore, whichever is less is the large advances. Now, large advances, in large advances cases, we have to verify the specific details. All the points which are given in the long form audit report relating to loans and advances, all are specific details. In large advances, we have to verify all the specific details. Next word they have used, the transaction audit. This is the meaning is very wide about this. If I read normal meaning, understood that what is the transaction audit? Means if the account is having the 50-page statement, can I do the transaction audit of all the transactions, seeing that from where it is coming and from where it is going? So point is this, I can review the statement on the basis of the review with the naked eyes in the statement. I can, if I will make out some conclusion, some problem in this account, then I can comment on it. So this is what we have to do for the threshold limits here, upper ke account. Now, below threshold, they have also mentioned process needs to be commented. Ultimately, we have to verify the account below threshold limit also. So this is the guideline. Simultaneously, RBI has asked to give the complete sample of all the loans accounts which we have reviewed and verified in this long form audit. Only request to every member that we should not include in this list the account which has not been verified by us. Whatever we have seen, whatever we have verified, only that account we have to give in this sample list. Next point. RBI has to give the list of accounts which have become NPA within 12 months of the sanction. It is very easy to verify it. Bank is having the NPA statement with us. See the rate of NPA which have been accounts which have become NPA in the current year by the declared by the bank during the year. See what is the date of the sanction. If it is within the 12 months, then we should comment in this column about this. Or any account which we find that is NPA, were not declared by the bank as NPA within the 12 months, that should come. Next come, this is very important for this year at least. This is a specific detail. Whether in borrower account, the applicable interest rate is correctly fed into the system. That has been asked. And this year, rates have been revised many times, 3 or 4 times at least. Now this is very important. And one more item is there. Whether the interest rate reviewed periodically as per the guidelines applicable to floating rates, loans linked to MCLR and EBLR. How to verify this? First of all, we should ask the bank to provide the audit trail with regard to the rate of interest modified in all the loan accounts during the year. If we will get that list, that will be a great help to us. But we should ask that list, at least from them. So when we will get that list, we will come to know in one account 3 or 4 times the rate of interest has been modified due to the change in the repo rate or the risk premium, whatever it is. And ask the bank the circulars also.
effective date of the modification of the rate of interest in the system. The circulars will be available, list will be available. In case of the accounts above threshold limit, we have to verify 100% and do the sample checking and comment it here. Now, point comes, bank will not provide that list. Either they will not be having or they will not be able to get it on our demand. It doesn't mean I will write the list has not been received. I'm not able to comment on this. Above threshold cases, we should verify 100%. These are specific detail and it can be easily verified in the system. Ask the branch manager of the branch to open the interest screen of a particular loan account, and they will show when the rate interest modified, on which date, effective date, old rate and new rate. So see the documents, see the circulars, why the rate of interest is modified and which is the effective date of this. So in case of large advances, we can do same way. If list is not available, take some samples of other advances, small advances also, category wise, do some sample checking and make comment in these two columns. Next comes, have you come across the cases of frequent renewal, rollover of short-term loans? For that, RBI has issued a circular in 2020, August 2020. What was happening in some of the banks? They were simply clicking a button in the system, and in the system accounts were renewed or reviewed or short reviewed without doing actual renewal or actual review. In case of the CC account, my humble request is we have to see the files and then reach to conclusion the proper review or renewal of the short review has been done or not, number one. And what was happening in some of the banks? They are making a simple on a piece of the paper a note. In these 50 accounts are short reviewed and signed by the higher officers, and accounts are short reviewed in the system. And that short review has been done frequently from the years, and accounts were remained standard. RBI ultimately catch hold it in 2020 year, and they have issued a circular which instructs the bank, direct the bank. Bank should have the detailed board approved policy with regard to methodology and periodicity of the renewal. So in the very first day letter, I can ask from the bank, please keep ready the board approved policy for our review. Second thing RBI has in this, bank should avoid the frequent and repeated ad hoc and short review or renewal without justifiable reason, and they should keep all the renewal data in I-code, and same should be provided to auditors for scrutiny as and when required. So no doubt I can ask the branch. In the very first letter I will write to them, please keep ready the system generated report with regard to the renewal or short review in the system by the branch. So these are the two support RBI has given. Please take care of in this point. When we write about this and ask the bank in LFAR, when we comment that in so many cases accounts have not been renewed or reviewed. But take care of IRAC norms. IRAC norm says if account is not reviewed within 180 days, account will be classified as NPA. If we are giving any adverse comment with regard to the renewal or review here, then we should take care of that. If MOC is desired in this case, we should comment on that. Next comes whether correct valid rating, if available, there is one more word is used in this. Let me see. Frequent renewal, public rollover. I've seen last year in one of the branches, gold loans have been rolled over. If you see the gold loan sanction letter, it speaks you should make the repayment within 1 year. The bullet payment or 1.5 year period will be specified there. But what happens after expiry of 1 year? Logically, what I should do if I have taken a 10 lakh rupees gold loan from the bank, I have to make payment after 1 year. After 1 year, first of all, I should deposit 10 lakh rupees in my saving bank account, and bank will transfer that money from my saving to loan account, and loan will be squared up. In some cases, when I reviewed the saving account, instead of the borrower deposited 10 lakh rupees,
Bank has deposited 10 lakh rupees in the saving. How they have deposited? They have sanctioned another 10 lakh rupees loan, created another loan account of 10 lakh rupees, credit that amount of 10 lakh rupees to the saving account, and from out of that 10 lakh rupees, the amount was transferred to the old loan account and that was closed. And security remains the same. If this is happening, I think this is not permissible. This is not the right way of doing this. This is called rollover. Next comes credit rating. This will be applicable to the large branches, basically, large accounts, borrower accounts, above threshold. Normally, you will find in that. So RBI asked, please see whether the bank is getting done the credit rating of the large borrower account as per the policy. Then I have to ask, what is the policy of the bank in this regard? For how much amount above funding bank has to get it done, credit rating from the RBI approved agencies. RBI issued a circular on January 9, 2023 in this regard, where two names have been removed, Brickwork Rating and Samera, and the new list has been issued by the Bank of India. Now we have to see whether the bank has get done the credit rating from the approved agencies. If not done, we should comment it. If done, we have to see whether it is expired. If it is expired, then it is not valid because it is for a particular period. So if it is not valid, if not valid, then we should comment. And we should see what is the credit rating. If it is a down, why it is down? That is a very major issue. If it is a down, what is the reason? Whether it is affecting my classification, whether any comments is to be given in this report, why it is down. So this is what we should take care of. Next come, did the bank provide loans to the companies for buyback of shares? As per RBI guidelines, bank cannot finance for the buyback of the shares. Certainly RBI might have got some issue somewhere. That is why that point has come here. So the buyback shares. We should ask from the bank, from the branch, please tell us in how many cases at the branch buyback of the share has been done. And if bank is providing or any list they are giving, in these cases buyback has been done, we should review the account. It should not happen. Bank is financed for the stock purpose and the money is being used for buyback of the share. That should not happen. That is the questioning remarks RBI has added in our audit program. We should take care of it. Next comes stocks and book debt audit. That is the same. There is no change in this. But only thing we should take care of it, again, contradiction in reporting of the stock and the book debt statements. Normally we write in so many cases the stock statement or the book debt statement have not been received. But other side of the IRAC norm, what it speaks, if DP is allowed on the basis of the stock statement older than 90 days, it will be deemed irregular. If this irregularity continues for 90 days, account will become NPA. As on 31st of March, if stock statement is pertain to the September month and DP is being allowed, then account will be classified as NPA. Give MOC for that. Number one. See, one more line is added here. Is the DP properly computed? In specific, this is specific details. In large advances, we should see a 12-month stock statement, see how the DP has been calculated, whether it has been correctly calculated, it has been correctly updated under the system or not. If it not be correctly updated, then we will not get the correct result from the system itself. If it is wrongly, then we should see if the correct DP should have been fitted in the system, what would be the impact of this in my classification. And today's, in the CARO also, in the bank balance sheet, corporate balance sheets, there is the extra information with regard to the book debts, more than 6 months disputed, undisputed, and see the report if auditor is qualified with regard to any qualification in their report, that the report submitted to the bank, there is a mismatch of that. So please take care of it. DP calculation. There is normally question in the seminar. Sir, what should we do if the party is providing a stock statement which is inflated and creditors are less, stock is more? What should we do? So in practically what we have done, I can share with you. Suppose I am doing the audit March 23.
see the March 22 balance sheet, March 22 stock statement, compare, that is the case. Then I will go for the 2 years back. So party is submitting, if I will able to prove that stock statement being submitted on a monthly basis by the party are incorrect, data is inflated every time. If I am able to reach to that conclusion, I can declare account NPA not from the current year, even from the back date. If I find it, my findings are there, and classify the account doubtful straightforward in the current year also. So point is this, but for that we have to substantiate, we have to give MOC with justification. We should give the proper reasoning why it is so. Then only we can do that. Next comes stock audit. These 3 clauses were already there. Whether the system of stock audit exists or not, if so, whether the branch is complied with, cases where stock audits were required but not conducted. That we were giving earlier also. But one more line is added by Reserve Bank of India. What is that? Where the stock audit was conducted, but no action was taken on adverse features. That is added. And this line can be answered by auditor only when we will open the stock audit report and we will read the findings of the stock auditor and see what is the impact of that and whether action has been taken by the branch, whether they have written the letter, what reply has come. But second purpose of this reading the report is that after reading this report, we will come to know certain irregularities which I will like to place in the long form audit report also. Whether DP is to be reduced due to the stock audit report. If yes, what is the overdue portion? If account become NPA. So there are so many things can come out of the stock audit report, reading and the observations that we should take care of. Due diligence. If you see the institute guidance note, there are 4 circulars have been given in that. Issued in 2008, 2009 and 2012. These circulars relates to the lending by bank under consortium on the multi-level banking. When bank goes for further extension renewal, there should be an exchange of the information with the banks, number one. In case of the consortium banking, there a due diligence format is been given, which is to be signed by chartered accountant or the company secretary. Ask for these reports. What are the features in that? What is the reporting in that? What are the adverse issues in that? So this is what we have to do. Normally it will be applicable to the large advances, and then we should take care of it specific because in the accounts with above threshold limit, all details have to be seen by us. One more point is added in this new LFAR last year, whether there is substantial deterioration in value of security during the financial year as per latest valuation report in comparison with the earlier year valuation report. This is to be have to see. Or what the IRAC norm says, if the fall in the value of security is more than the 50%, it should go directly to doubtful. If value of the security is less than 10% of the outstanding, then it should go to loss asset. And if it is a case of the fraud, then 100% of provision required irrespective of value of security. So these are the guidelines in the IRAC norm. Now point is this, what we have to take care of in this case, substantial deterioration. In this LFAR, it is not mentioned 10%, 20%, 30%. It is mentioned substantial deterioration. Now 20% fall in a value of security can be substantial, but not necessary. In IRAC norm, in this particular 3 situation, it has to be classified as NPA. But due to this 20% reduction in the value of security, is the account NPA? Why it is so? So if there is a fall in the value of security, we should give suitable comment in LFAR, but we have to be very, very careful when giving the comment in this clause. We should see whether due to that fall, whether DP is being reduced, number one, whether due to that the account is becoming NPA, whether there is a loss of assets, to what extent. So 50, 10 and fraud, these were given there. But here we have to give the comments, even if it is a lesser than that, and what is the impact of that on the my accounts will come, that we have to take a call on this. Red flag accounts. In large advances, we should take care of it. RBI issued the master circular on frauds.
In this fraud circular, they have given a list of 42 early warning signals. And banks have been asked, please issue their guidelines with regard to red flagging of the account. Ask the bank in the very first day, please keep ready your red flag policy. Second, ask, give the list of the red flag accounts. And red flag accounts, the branch aapko de degi, then we should see out of that whether they have followed the bank policy with regard to the follow-up or the action is to be taken. NP classification. There is also the possibility the bank has not declared the account red flag, but we have found that account is red flag. Then whatever decision we have to take, we should take on this and report it. So this is the red flag clause. 5 standard account. Next, this is very important. I think Chopra sir might have discussed. Let me discuss in detail. Has the branch identified, classified advances into standard, substandard, doubtful, loss through the computer system without manual intervention? The point is this, as a branch auditor, I have to confirm it has been done only through computer system without manual intervention. And simultaneously in 2020, RBI issued a circular. If bank is doing any manual intervention in classification, they should keep the all audit logs or audit trails with regard to this manual intervention for us, for auditors. These logs should be stored minimum period of 3 years and not to be tempered with during the storage periods, so that we can ask. So in the very first day, we should ask the bank in writing, sir, please provide the list of all the audit logs with regard to the manual intervention in classification of advances. ये हमें मांगनी है. So point ये है, जब till the branch will give me this audit logs, how I will comment in that? Branch will give the standard reply, sir, NPA classification has been done by the corporate office or the journal office. We are providing you the list. We are providing you the list what we got from the head office. But branch has to reply this question. I am telling you, take letter or the mail in writing. If they say, sir, this is not available, then we can write here, we have asked for the audit logs with regard to the manual intervention, but same are not available and even a branch has not confirmed. Hence, it is not possible to verify whether manual intervention is there. So this is the what specifically we have to take care. Next comes SMA 0, SMA 1, SMA 2. So that is the banks are, we will ask the bank the daily list of SMA, they will provide us. Now the most important thing what has come, there is a circular issued by Reserve Bank of India in November 2021. Now problem has come in this circular. It has to be done on daily basis. Intervals are intended to be continuous. As Chopra sir were telling earlier, the date used to be 31st of March or 31st December, date of NPA. Now it is not like this. Bank has to do daily exercise. At the end of the day, operation has to be done every day and see on the basis of that which account is SMA 0, which account is SMA 1, which is SMA 2, and which is NPA. So that system will decide on the very day, same day at the end of the day, and it is continuous. So in this circular, a complete example is given. Earlier, what we used to do, in case of the non-leap year like 2023, if account is overdue more than 90 days, then account will be NPA. We used to say this. And we used to say this on 31st of December installment is due. It will become overdue on 1st. If it will become overdue on 1st, only 90 days has expired, not more than 90. But now in this circular, example itself is given. The day on which amount is due for payment, if not paid on that day, it becomes the overdue on the same day. Means 31st December. So 31st December will be the first
day of overdue. Now, even as per this guidelines, if any installment or interest is debited to the account, installed due for payment on 31st, or interest debited to the account on 31st December, if it is not paid till 31st of December, now 31st March will be the 91st day. On 31st, it will become NPA. In this circular, a clear example is given for SMA 0, SMA 1, SMA 2, and NPA. Now it has to be done continuously. One more amendment in this circular has come with regard to interest payment. Earlier, what was in case of term loan? In case of the interest payments, bank should classify an account as NPA only if interest due charge during the quarter is not paid within 90 days of the quarter. Now this clause is deleted. Now what it says, as and when debited, as and when interest is applied, if it remains overdue more than 90 days, account will become NPA. Now this clause has also been amended. I'm telling you, all these circulars have been incorporated. There is a master circular on IRAC norm 1st April 2022. That is a complete Bible for this year audit. All this what I am discussing has been incorporated in that. Example, if you want to see, you should see November 2021 circular. Similarly, this clause is also applicable to cash credit accounts also. In cash credit account, there was a line that if the credits are not sufficient to cover the interest debited during that period, at balance sheet date, account will become NPA. The word at balance sheet date has been removed. So this is deleted. Now it is also continuous. Every day system will see whether CCOD account, number one, due to the 3 reasons it can be NPA. If it remains overdue, it is more than the DP of the sanction, whichever is less, continuously for 90 days, it will become NPA. If credits are not sufficient to cover the interest debited during this 90 days, and there is no credit. But this process will be now continuous. A point comes, as auditor, how I will verify and ensure this process has been adopted by the bank or not. If you will ask the bank whether you are doing the continuous classification every day you are deciding what is when the account is NPA, what is SMA 0, SMA 1 or SMA 2, they will say simply yes. But now point is this, how I should verify it? That is the question. So what banks are doing, banks are every day generating a prospective NPA list. And in this list, it is marked, it is SMA 0, SMA 1 or SMA 2 or NPA. So no doubt, this list is being generated. They are provided, but how I can say the account is classified as NPA or not? So on test check basis, what I can do, when the bank will give the NPA list, there must be certain account which bank has classified as NPA in the current year. And date of NPA will be there. Please provide the SMA list for this particular date. When we will see the particular date report, 5 or 6 or 7 dates report, we can pick up and then see same date, same account is appearing in that status on that date report or not. So that will be a test for us. Then we can comment it here. So this is what we should see, because what will be the impact of this continuous classification, everyday classification? I am telling you the impact of this. Suppose one borrower is having the 4 accounts. One is CCOD and 3 term loan accounts. One term loan account is 15 days overdue. Another term loan account is, say, 30 days overdue. Another term loan is 60 days overdue. But accounts are not NPA. Suddenly, the CC limit becomes NPA. Now, if one account is NPA, all accounts are NPA. Now, guidelines is this. Another guideline is this. Account once declared NPA can be upgraded only when all the irregularities in all the credit facilities have been regularized. Now it has become NPA. It can be upgraded only when all the 3 term loans on that day should not have any overdue amount, even for a day. No overdue should be there in all the 4 facilities.
then only it can be upgraded. So these are the summary of the amendments which have been issued by Reserve Bank of India in this circular. These all have been incorporated in the master circular of the IRAC norm dated 1st April 2022. Next, restructuring. I will request the members to take care of one aspect, because up to the last year, MSME separate benefits given, there one-time restructuring has been given, then it was extended, then ECLG funding has been done. So this chapter was closed up to the last year. But what is happening, we should see all these loan restructure during the COVID period or ECLG funding has been done. Now we should see if the due date has come for the payment, if it has not been paid, account will be classified as NPA. Please take care of that aspect. This type of COVID restructuring plus ECLG funding, see on the due date money has come or not. If not, there is a possibility bank might have restructured it again, which is not allowed. So please take care of that aspect. Another aspect which Chopra sir was discussing in brief, new restructuring guidelines, which has come last year. And what are these guidelines? Because I took around 2 days to make the summary of this. So members should read it carefully. It is given in the part 2B of the IRAC norm circular. What is this guidelines? Account will be treated as restructured if any concession is given to any borrower who is in financial difficulty. That is the same definition which was earlier. In this circular, some examples of financial difficulty has been given and some exhaustive list of financial difficulty that is given. What type of default he can do and what type of concession can be given. So if any borrower who is in a financial difficulty, any concession is given, account has to be classified as NPA. If it is a standard, then it will become substandard. If it is already NPA, it will continue to be that. So these are the guidelines with this regard. Suppose I am going to the branch. Branch has given in concession, but they are telling we have done rescheduling, we have done refacement. This is not restructuring. But as per RBI guideline, any concession to borrower who is in a financial difficulty is restructured, and it has to be classified as NPA. Now, the upgradation of the loans under this scheme, new guidelines, how it will be upgraded? Number one, they have made 2 clauses. One is for MSME less than 25 crores. These guidelines are for upgradation of those loans which are MSME less than 25 crores. And another guidelines for the loans 25 crore and above MSME and others. So these are the 2 clauses. Now you see what are how these guidelines are tough. MSME below 25 crores. Account can be upgraded only if it demonstrates satisfactory performance during the specified period. What is a specified period? For example, a borrower has taken a 4 loans from the bank. Okay. Now it can be upgraded. First, we have to pick up out of these 4 loans, the loan which is having maximum moratorium period. When resolution plan was made, some moratorium period is given. Pick up that loan account which is having maximum moratorium period. Now see the repayment schedule of that particular account. See what is the due date of the payment of first principal as per resolution plan of that account. See what is the first due date for payment of the interest as per the resolution plan for that. Whichever is later, and add 1 year from that date. Then, for example, in this case, specific period comes to 2 years. For example, 2 years. So account can be upgraded only if it has shown satisfactory performance during the specified period. Specified period is 2 years. What is the definition of satisfactory performance? It is very tough. In case of the term loan, satisfactory performance means no payment. The word they use, no payment. Interest and or principal shall remain overdue for a period of more than 30 days. During these 2 years, as and when interest is debited or as and when principal is due for the payment, if it is remain overdue for 30 days at any time,
it cannot be upgraded. A new resolution plan will be implemented. This is the guideline also. Now, in case of CC, similarly, CCOD satisfactory performance means the outstanding in the account shall not be more than the sanction limit or DP whichever is left for a period more than 30 days. बाद में रेगुलर है पर बीच में कभी भी 30 दिन से ऊपर कंटिन्यूअसली हो गया, it cannot be upgraded, new resolution plan will be implemented, account will remain NPA. So these are the guidelines for upgradation of MSME. Below 25, अब आ जाइए 25 करोड़ या उससे ऊपर के MSME और बाकी लोन के लिए अपग्रेडेशन की क्या गाइडलाइंस है, उसकी गाइडलाइन भी सुन लीजिए. यहाँ पर satisfactory definition differ with that. Specified period definition differs with earlier one. And one more new definition and introduced in this clause is monitoring period. So they have given two words. What is the monitoring period? Monitoring period means a period from the date of implementation of resolution plan up to the date by which at least 10% of the total resolution plan, total amount, it is paid. And specified period definition here is from the date of the resolution plan till the date by which at least 20% of the outstanding principal debt as per resolution plan is paid. For example, there is, at the time of resolution plan, total amount is recoverable, say 100 crore rupees. Monitoring period will be the period from date of resolution till 10 crore rupees is paid. And specified period means date of the resolution plan till 20% of the amount, any 20 crore is paid. So these are the definition. A satisfactory performance definition, it is more tougher than the earlier one. Satisfactory performance means borrower entity is not in default at any point of time. वहां 30 दिन तो दे दिए, यहाँ पे तो वो भी नहीं दिए. Now what auditor has to see? What are the guidelines of upgradation? NPA account can be upgraded only when all outstanding facilities demonstrate satisfactory performance, but not in default at any point of time during the monitoring period. Monitoring period means till the 10% is paid. अब ब्रोवर वो बहुत समझदार है, वो क्या करेगा, 100 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान है और 2 महीने में 10 करोड़ रुपए दे देगा. वो जी मेरा अकाउंट तो 2 महीने में अपग्रेड कर दो. आरबीआई ने कैप लगा दिया. Provided that account cannot be upgraded before 1 year from the commencement of the first payment of interest or payable, whichever is later. The definition which is used in MSME. उससे पहले अपग्रेड नहीं हो सकता. अगर मॉनिटरिंग पीरियड में अपग्रेड नहीं हुआ, then again resolution plan will come. Default is there. Then 15% extra provision is to be made with whatever we are doing existing provision. Existing provision जितना भी हो रहा है वो तो चलेगा. उसके अलावा क्योंकि resolution plan दोबारा बना, डिफॉल्ट में आ गया, 15% का एक्स्ट्रा प्रोविजन करना. मान लिया अपग्रेड हो गया, मॉनिटरिंग पीरियड भी निकाल दिया, टाइम पे पेमेंट भी हो गया, मेरे यहाँ अपग्रेड भी हो गया, नो प्रॉब्लम. पर मेरा भी स्पेसिफाइड पीरियड अभी नहीं खत्म हुआ. इन माय ब्रांच, इन माय बैंक, द लोन इज अंडर द स्पेसिफाइड पीरियड. इट इज अपग्रेडेड because there is a consortium loan and borrower has become defaulter in another bank. Because there is a default in another bank, then again the resolution plan will be implemented. Then 15% provision has to be done because it has done default in that. It has been upgraded in my bank, no doubt, but 50% provision is to be made. So I request the members, in case of restructuring, be very, very careful. Number one, COVID, the accounts restructured during the COVID period. What is the situation at present in these accounts? ECLG, what is the situation? And this restructuring under the new guidelines, whether account will be restructured or not. If restructured, then account has to be classified as NPA. This is just of the restructuring as of now. So we should be very, very careful because in long form audit report, RBI has asked to confirm all the IRAC norm guidelines
and confirm whether it is being adhered to or not from us. Next come upgradation, which I have already told you. Upgradation, all the irregularities in all the accounts have been regularized. If you don't agree, please give MOC. Please take the last year NPA statement. Compare this statement with the current year NPA statement. If accounts are not appearing in current year NPA statement, see how it has been upgraded, whether the compliance of the RBI guidelines has been done. IBC code, it is again applicable to the large branches or large borrower account, where the mandate has been received from the corporate office to file with the IBC, whether the branch has done it or not. If not, let comment it. Now, another thing we should ask from the branch, bank has not mandated, no problem. But any other lender has mandated and they have filed an IBC. Please take that data from the branch and comment it here. And if any provision is required, make it in your books of accounts also. Easy. All these government scheme accounts. Earlier also we were giving. The only thing is one word, one line they have added, and we should take care of it. Where the claims are being rejected, whether same has been appropriately considered while determining the provisioning requirement. Because the methodology is given an IRAC norm circular, total outstanding and less security balance, then percentage covered by ECGC or CGTMS, any other scheme, balance 100%, doubtful provision, unsecured portion. If claim has been rejected or not in the line of the scheme, then that is not secured by that scheme. Then I have to treat it as unsecured and make the provision wherever I need. One more information we have to obtain from the bank. Decree account. How many cases decrees have been, account have been decreed in favor of the bank, and whether the execution petition has been filed or not, whether there is a delay. All these data we have to take from the bank and to give in this report. So this is what we have to take care of. Next, non-fund based. Earlier we used to give the list of the cases LC devolved or BG invoked at the year end and outstanding for receipt. Now we have to give the complete list of all the LC devolved and BG invoked during the year. We should ask that list and make a part of the long-form narrative. They have to provide it. But when we get that list, also we should see whether bank is having a system of parking the LC devolved or BG invoked in a separate account other than CC account. If that is there, go to the IRAC norm server, what it speaks. If bank is adopting that policy, then it should be treated as a part of the principal operating account and account should be classified. And if it remains overdue more than 90 days. One more clause added. Interchangeability of fund base and non-fund base, if it is done subsequent to the devolvement of LC or BG, it is not permissible. For example, the bank has given 10 crore CC limit and 10 crore LC. All are fully utilized. 5 crore LC devolved. Now it is to debit to the CC account. When it will be debited to the CC account, it will become overdue and account will go on NPA. What the bank does? They reduce the LC limit by 5 crore and increase the fund based limits 10 to 15. This is not permissible. RBI might have found somewhere, that is why they have added in this report. This is the contingent liability LCBG. One more thing we should take care about this contingent liability. There is one more column in the long form audit report and banks are taking certificate of that. Contingent liability is not acknowledged as debt. Means cases filed by others on the bank, claim on the bank. These legal cases we should ask from the bank, provide the list. How many claims have been filed against the bank? What is the present status of that? What is the exact value which is coming as of now? If decided against the bank, bank has to pay. Please see that figure. It has been correctly computed because ultimately capital adequacy certificate figure will be affected by this. So these are the points relating to advances. Now come to other than advances. In these cases, what RBI has done, RBI has included some of the clauses which has to be verified the concurrent auditors. Representation were there to RBI,
but they have not accepted it or they have not replied it. Ultimately, we have to do that verification. Tell me in that way. There is a one clause. Please confirm, please verify. There is an automatic renewal, auto renewal mode, FCNR, BFDR in the bank, and they have been auto renewed. Whether the bank has obtained a confirmation or the evidence from the account holder that he is still holding NRE status. FCNR, BFD can be retained or opened by only the person who is having NRE status. It is auto renewed. Now bank has to keep or to take evidence from the NRE account holder that is still holding NRE status. This is what it means. Now as auditor, I have to verify. What I should do? I should ask the bank, please provide me the list of all the FCNR, BFDRs which have been auto renewed during the system. Take that list, pick some samples, and then ask the bank to provide the evidence in this way. So this is what we need from the bank. Next comes saving bank, minimum balance charges, which have been recovered by the bank in the saving account has been as per the RBI guideline. In 2014, RBI has issued a circular in this regard. What it states, if the balance is maintained below the minimum balance, then first bank should issue a letter or intimation to the party, to the account holder, stating that you deposit the money within 30 days, otherwise charges will be debited. If not maintained the balance, then bank can charge. How much they can charge? Suppose bank is having a system, for 10,000 not maintained, we will debit 1,000 rupees charges. I have maintained 6,000 rupees. The bank cannot debit me 1,000 rupees. Shortfall amount is 4,000, proportionate amount 400, they can charge me. This is what I have to, as auditor, verify and comment it here. Do some test check, write how many cases you have verified, and give your comment in this long form audit. There are two clauses with regard to the gold. I remember this format was submitted to Reserve Bank of India by Institute when Chopra sir was president. At that time, these clauses were included because banks were selling gold coin at that time. Now, no bank is selling gold coin. But still, these two clauses are applicable to the banks to the extent because some branches are still holding the old gold coin stock since then. To that extent, it is applicable. We should comment if our branches are holding the gold coin stock. Next one. Where the software system used by the branch which is not integrated to CBS, it has come from Nirav Modi. How statutory auditor can verify the branch manager is not using Tally or the Computex in the branch, which is not integrated to CBS or any other software? I can see my concurrent audit report, I can see the IT audit report, and last but not least, we should obtain MR from the bank. And on the basis of MR, we should comment it. Next, exception reports. First two clauses were already there. We were all on test check basis asking the bank to provide the whether you are generating the exception report or not. In second clause, they have added the word verifying. First, we should take sample, give some sample, provide exception reports. They will provide exception report to us, see whether they have evidence having verified or not. And third one, that I can report only when bank will provide me the data. What is that? If any major issues which has been reported or detected, error detected by the branch officials at the time of verification of exception report, whether any such issue is pending for compliance or rectification. If yes, we should report it. Now that bank, we have to ask from the bank, sir, please provide, is there any issue? List of the issues which you have observed in the verification of exception report. First, take that report and see that if there is anything, then we should report it. But we should ask this report. If they are saying nil, no error pending, take MR and then confirm as informed by the branch, no error is pending for compliance in this. Next, one manual intervention we have discussed earlier with regard to NPA classification. This is another clause the bank have visited here. Whether the bank has a laid down procedure for manual intervention to system generated data,
with proper authentication and a proper audit trail. Here it has mentioned audit trail in long form audit report itself. Now, what is that basically? For example, bank has charged local rent to in my account twice. I will ask to refund it. So what the bank will do? They will pass the manual transaction voucher, giving debit to their income and carry to my account. My FD has been opened for rupees 10 lakh rupees. On maturity, interest has not been applied by the system. 10 lakh FD, 10 lakh credited to my saving. So I have not got the interest. I will make a claim. The bank they will do. When my FD is closed, system generated interest will not be generated. They will give debit to interest paid and credit to my account and with TDS payable credit. So this is manual transaction, manual intervention. Same way, higher rate of interest wrongly charged by the bank. Now they are reversing by the manual voucher. So this is that point. But point is this, whether branch is generating, bank is generating proper audit trail for manual intervention or not. I don't know. I have to ask on the bank. Please provide me the proper audit trail of manual intervention to us. After getting that list, audit trail, then I will pick up the sample. Then I will see whether these entries have been authorized as per delegation of the financial power issued by the bank, because every bank has issued the circular in this. More loss, higher, it will go for the approval for a higher authorities. Even in some cases, it can go up to the board also. So this is what we have to do. Ultimately, what I said to you earlier, my members, my friends, we must know what we need from the bank. On the very first day when we issue a letter, we should say, please keep ready this item. So that at the end of the audit, we can comment on this, whether we are getting these details or not. One more important thing. They have asked, please comment on the data integrity, which is being used to generate the MIS at HO. How the branch auditor will know which data is being used for MIS at HO? Number one. Now here again, I have to give the scope limitation. It is not possible for the statutory auditor to confirm everything whatever is updated in the system is absolutely correct. We can't. But scope limitation has to be given. How we are doing? Bank is having the exception report verification system. See that whether any issue is pending for compliance. That is a data issue, error issue. Mitra committee recommendation. Bank has to regenerate a report at the end of the day as per this Mitra committee's recommendation for high value transaction and re-verify it, whether it is made in concurrent audit or whatever I have verified during the audit. On the basis of that, my comments are as scope limitation we have to write. Now inter-branch. One report I discussed earlier. Ask for the list raised by other branches on my branch, but my branch has not responded. Now this report is applicable to all, and this clause can be verified on the basis of that report only. For example, my branch has sent 20 lakh rupees to Consichus branch. My branch has credited to cash and debited to Consichus branch through inter-branch. Consichus branch has responded that entry, they have debited their cash and credited to my branch through inter-branch, debit credit knocked off, matter is over. When the cash was counted at Consichus, 20,000 rupee cash shortage was found. Now Consichus team will not pay this 20,000 rupees from their own pocket. They will give cash credit at their end and debit to my branch with the instruction there is a shortage of cash in the found in counting. Now, when I will ask, I have seen in my branch audits, when I seen on the 1st of April in the report, this 20,000 entry was pending unresponding. How it is to be responded by my branch? Either they should give the debit to the cashier who has sent the cash, or they should debit to the customer. They should identify which customer has given 20,000 rupees shortage. Or third is book a loss and report the fraud. That branch will not do. So this is one of the example. There may be any other example also. When the entries have been raised by other branches of my branch, but my branch has not responded it. If it would have been responded, what should have been the entry?
up to 31st of March, whether it is affecting my MOC or my balance sheet or my profit and loss accounts, please report it here as well as give MOC for that. Fraud. They are the same clauses. There's no change in this. These data we have to obtain from the branch. Fraud reported, fraud detected, whether reported to RBI or not, whether likely or suspected fraud reported, take the list of that. If during the audit or observation we feel there is any weakness in the system which can lead to the fraud, that we can give. Now here, there are 2 points. One is this fraud. Another is there is in the last there is a column. Have you come across any major observation in the concurrent audit report or the inspection report which is pending for compliance? You are in Calcutta. Loans and advances portfolio is being handled by RPCs and CPCs. When we go to the branches for advances audit, they say, sir, for documentation, you have to go to CPC, RPC. We go there, we verify and give our observation on this. When we ask from the branch, please give a certificate how many frauds detected by you. Branch manager will give gladly a certificate that in language will be that in my branch. In my branch, no fraud was detected. Next, concurrent audit and inspection. So this is the concurrent audit report of the branch. This is the concurrent audit inspection report of the branch. Now, point is this. Fraud relating to advances might have been reported by CPC, RPC. Who will give the certificate of that? Because the direct norm says if there is a fraud, 100% provision is to be made. So I need certificate for both branch as well as if any fraud reported by CPC, RPC relating to my accounts, I need that list. Number 2, loan and advances concurrent audit might have been done or inspection has been done at the RPC and CPC. At least asked, please provide any major observations pending for compliance in both this report at CPC, RPC. If branch is not providing it, please give a suitable remarks in LFR, concurrent audit report or the inspection report or the fraud reports have been verified as provided advance relating to the branch only. So we should make suitable comment on that. Last but not the least, KYC AML. KYC certainly we can do. Say 20 accounts, take the saving account, some account of the current account, and we can verify as per the guidelines, compliance has been done. Problem comes to anti-money laundering. Whether the branch has followed the KYC AML based on your test check carried out. We should define here the test check, what we have carried out. Don't give clean sheet. There is no AML issue in the branch. Test check and scope limitation we should give. What we have verified. For example, ask for CTR reports, ask for STR reports, high value transaction papers, or 10 lakhs and above transaction, high value RTGS. So review that because there is a guideline in anti-money laundering that bank should ensure that the nature of transaction commensurate with the nature of the business. There are the cases when DDs are being issued in the cash. Cash is being deposited and outward remittances are being done. Inward remittances are being done and the cash is being withdrawn. Husband, wife, son, daughter, all are depositing cash in one account having the PAN. And money is being remitted to one account through anywhere banking in any other city and where the money is being withdrawn. If there is a circular transaction, we can comment it here. So point is this, my humble request is only that wherever there is a wider meaning of any term, we should give the scope limitation in that and then move forward. Nitesh ji, now I have completed. Now we can take question answer any query from any member. Yeah, thank you, sir. Tell me any query. Sir, just now we discussed about the KYC. Now the banks are online and they are doing the KYC online through tab or mobile system. There is no document available at the branch for checking the KYC. Even though how we can... Sir, I am talking about the new accounts open. New accounts open, some banks are using tabs also for new accounts open. That all data is available at the bank on their system. Some banks have been doing, they are not keeping the hard copies. All these soft copies are available at the branches on their desktop or in their system. Take up some samples, see what is the requirement, whether all have been complied in the soft copies or not. That we can do.
और बताइए, any other question, sir? Now requesting the delegates, you can raise your hand and ask the question directly from our We have Sir Ajay enabled the sir. chat box also. People can put it in chat box. It was not enabled before. Gaurav And Gupta. Unmute Gaurav Gupta has themselves. raised the hand. So Gaurav ji, you can unmute and ask the question. Good evening, sir. Ajay sir. Gaurav sir, you are from Amritsar, if I am not wrong. Yes, sir. Welcome, Gaurav ji, to Calcutta. Yeah, sir, I was trying from the last several days to listen to you with PPT, sir. Tell me. Sir, as we all know, interest subvention की guidelines में कुछ change हुआ है, इसमें rate reduce. उसको थोड़ा explain कर दे. ऐसा है, there is no change except one change, because in case of the KCC loans, there is a 3% interest subvention benefit to the farmer, and earlier it was 2% to the banker. Provided bank is charging maximum 7% rate of interest from the farmer. So bank was charging earlier 7% from the farmer, and 2% bank was getting from the government. Up to 3 lakhs, sir. Up to 3 lakhs. Fine. Now point is this, now this 2% benefit is reduced to 1.5% this year. Regarding farmer, it will remain same 3%, and that is up to 3 lakh rupees. And 3 lakhs, there are two schemes. One is for KCC. KCC basically word is used for KCC scheme has been implemented for short-term crop also, and KCC has been implemented for fishery and other also. So name is the same, but cards are different, loan accounts are different in that. So both combined maximum benefit is up to 3 lakh rupees. And priority will be, suppose one farmer is having a loan of the short-term crop also and simultaneously having the fisheries also. Say 5 lakh rupees crop loan or 2 lakh rupees fisheries. The priority will be given to crop loan. 3 lakh crop will be exhausted and no subvention will be given for fisheries. Number one. For example, 2 lakh rupees crop loan and 2 lakh rupees fisheries. 2 lakh crop loan, then 1 lakh balance will be given to the fisheries. In the KCC Master Circular, there's a complete example has been given by Reserve Bank of India. About this, I request the members to download that circular and understand. This year, the only change is 2% and 1%. Ultimately, that is the important thing we should take care of. Bank should not charge more than 7%. See on test check basis. In account, if they have charged 9% by 31st of March, at least 2% should have been reversed. Ultimately, debit interest to farmers should not be more than 7%. In this scheme, ultimately, farmer will get has to pay 4% interest basically. 7, he will pay 3%, it will be refunded through the subsidy, then it will be 4%. This is the gist of this issue. और बताइए गुप्ता जी क्या होगा? सर एक रेड फ्लैग अकाउंट में छोटा सा क्वेश्चन था. मान लो हमने अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, अभी वो स्टिल एट द SMA 2 की कैटेगरी है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट की जो प्रीवियस करंट जो सिनेरियो उसमें वो डाउन है अकाउंट, तो अकाउंट ही सर रेड फ्लैग में जाएंगे कि अदर देन दैट एनीथिंग सीरियस डिटेक्टेड शुड बी कैटेगराइज्ड एज NPA डायरेक्टली टू रेड. ऐसे गुप्ता जी बिटवीन SMA 2 and the red category account. No, point is this, SMA classification will continue as it is. There is no change in this. Number one. First of all, RBI has given early warning signal list 42. Bank has to make its red flag policy. Bank decide karega. Red flag is what? Basically, red flag, not necessary it should be NPA. Red flag means a warning that it can become NPA. Immediate action is required. So on the basis of these 42 items, अगर आप पढ़ेंगे गुप्ता जी, उस सर्कुलर में 42 आइटम पढ़ने के बाद लगता है हमें एडवांसेस की सारी कमियां पता लग जाती हैं कि एडवांसेस में कितनी तरह की कमी होती हैं. सो बैंक की रेड फ्लैग की पॉलिसी पढ़िए कि ब्रांच को उस अकाउंट को रेड फ्लैग कब करके ऊपर इंटीमेट करना है.
अगर उन्होंने कहा इसमें 4 कोई प्रॉब्लम आती है या 5 प्रॉब्लम आती है, इस तरह से आती है, सी दैट पॉलिसी, और उसके बेस पे क्या ब्रांच ने रेड फ्लैग घोषित किया है उसको या नहीं किया है। पहली बात तो ब्रांच से लिस्ट लीजिए, ब्रांच ने कितने रेड फ्लैग किए हैं। ये जरूरी नहीं है रेड फ्लैग हो गया तो एनपी हो जाएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। कमजोरी है, उसका फॉलोअप होगा, उस पर एक्शन होगा। रेड फ्लैग पॉलिसी इसीलिए बनाई गई है कि एक अकाउंट जाकर के 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बैड डेट ना हो जाए, so that early action can be taken. It depends upon case to case and the study and the scenario. Then we can decide what is to be done. It is a possibility, there is a possibility. हो सकता है बैंक ने रेड फ्लैग ना किया हो, हमने रेड फ्लैग करा दिया हो, और हमें तो लगता है कि इसमें इनहेरेंट फिक्स है, सब कुछ खत्म ही हो चुका है। तो मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो बहुत सारे क्लॉज है मेरे पास जहां मैं उसको एनपीए में ले जा सकता हूँ। That is not necessary that red flag should be NPA. This is my sir. Thank you, sir. और बताइए सर, any other query? Mr. Sanjay Mukhopadhyay, do you want to ask any question? You have unmuted yourself. हाँ यस सर। Yes. सर यदि कोई पार्टनरशिप के केस में बिजनेस लोन है और एक पर्सनल सेगमेंट में हाउसिंग लोन है, और एक लोन यदि एनपीओ होता है तो वो पर्सनल सेगमेंट का लोन भी एनपीओ होगा कि नहीं होगा? आपकी योर क्वेरी इज कि पार्टनरशिप फर्म में लोन है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में लोन है सर, if one account is NPA, all accounts are NPA. If I have taken a home loan in individual name, that is a very good question. I will multiply it further. Number first scenario, account is in my name, home loan I have taken, it has become NPA, my proprietorship is in my PAN, it will also become NPA. So whatever the individual capacity or proprietorship, all will become NPA. Number one question were under discussion. I think in so many seminars we have discussed that is coming. Suppose, because now the banks are giving home loan and there is it has become a practice to make a co-borrower. Husband and wife, they have become co-borrower. Co-borrower means both are borrowers. Remember, if co-borrower home loan becomes NPA, then how many other loans will become NPA? Husband individual name and wife individual names also, they will also become NPA because they are the co-borrowers. She is not the guarantor in this. She is also the co-borrower in this. So this is the clarification on this. और बताइए sir. Yeah, thank you sir. Any other question? Sir, regarding this security value reduction, is it 50% reduction or what the sir was talking about? That is what I have told you. हाँ. IRAC norm, it is basically linked to the IRAC norm. IRAC norm, it is clarified in these circumstances, we have to classify doubtful loss or 100% provision. But here substantial deterioration means what? It is not necessary. If substantial deterioration is there, it will go to the NPA. We should see the reason. We should, because we have to be very, very careful while commenting in this clause. It is not necessary. Because here 50% value, it will take collateral, everything complete, or 10% everything complete. Here substantial downfall can be in my stock only. But now we have to see substantial, we should give why it is there. Whether there is a sale purchase is not there or there is a loss of the stock. Then we have to see the reason and then we should reach to the conclusion of this. It can be 20, it can be 10, depending upon case to case. So we have a question on the chat box. So we have a question in the chat box from Shashank Shekhar ji. How we can check the under insurance cases? Under insurance, you should see the insurance cover note as you are telling under insurance. So then what is the stock statements they are giving to us? So that is the basic thing. Stock audit report. In every stock audit report, they have the auditor has to, who is visiting that, they are giving it. Then the balance sheet, then data, the CMA data, it is coming. All the figures are coming at least. So I think stock statement is evident.
plus stock audit report is very important in this case, because we have to see also not only that, whether the godown where the stock is lying, that is also insured or not. In the books of accounts in the bank, it is a X godown. Goods are being kept in the Y. So that is, if you are insuring X godown, not Y, so what is the fun of it? So we can verify from this. और बताइए sir. Sir, in case of sir, am I audible, sir? In case of a trading firm of steel item, MS Steel say, so crores of rupees stock is lying, but the borrower is saying that it is not required to be insured. Stock is not required to be insured because it is bulky, number one. Number two, it is non-incombustible, that it cannot be destroyed by fire. And only the structure and other things can be insured. So what's your stand, sir? And there is no clear-cut mention of insuring of a stock in sanction letter. Adequate insurance to be taken by the borrower. This is the simple line written in the, say, sanction letter. Every sanction is having a background material. Without background paper or working, no sanction is there. First of all, put the guns on the shoulder of the banks itself. Sanctioning authority. So we should ask in writing from the sanctioning authority. Otherwise, if they are simply written, we should not take out any meaning out of that ourselves. I will go with a conservative approach. I will go absolutely with a conservative approach. In case of land and building, it is always building insured. Land is not insured. Same way here. How I can say if there is a fire, the steel shape will not be changed? Just tell me. If there, have you find any steel factory where fire has taken place and stock is taken as it is? To my opinion. So in my opinion, I will go as per the sanction letter. Sufficient insurance is to be taken. It has to be. Yes, sir. Shape and value can be changed that stock in case of fire also. Sir, point is this, that I cannot decide now. That bank has to decide right now at the time of the sanction. What percentage? For theft, at least they have to take 100%. Bulky doesn't mean it cannot be picked up. Theft can take place. So this is what I personally feel. Because I should go with as per the sanction simply. If there is any other meaning is to be, the bank has to give. Not we. Sheri sir, what बताइए? Hello. Yes. जी आनंद जी पूछिए अपना क्वेश्चन. Sir, you have told regarding co-borrower. Now Yes. my question is a proprietor and a partnership firm. Both accounts will be NPA or not? No. Proprietor No. is NPA. Proprietor will be NPA. But there can be one possibility. Again, for that I leave on you to decide, because that matter is still a discussion. Both are co-borrowers. Fine. Yes, that is clear. Just listen to me. Both are co-borrowers, and all the accounts in individual name of the co-borrowers will be NPA. Now there is one scenario also when both the co-borrowers are partner in a partnership firm. Only these two co-borrowers are partner. No third partner is not there. That matter is still under discussion. We have not reached to conclusion on this. That is under discussion. Rest on individual case, it is a clear. It has Clear. Yes. So here, if we face any consequence, what to do? We'll report or how to mention? To mention when we are our observation. Not observation. But I am again telling you, when we give anything in long form audit report, if it reaches to MOC, then NPA has to be classified. No. If it is not reached to MOC, can we give any observation that this may be early warning signal like that? No. This is not early warning. Where account is, first of all, you are telling the account is NPA. No, we are not telling, but there is a possibility, because so that that possibility will come when account will become NPA. That banks also know about this. For this, we need not to write. We need not comment. हाँ, इसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है. तो co-borrower है, कल को ये account NPA हुआ तो उसके सारे account NPA हो जाएंगे. That we need not to write.
Only thing, if it is NPA, then we should straightforward say all other accounts in individual name, that is NPA. Achha. I have one query regarding bank guarantee. Yes. So the bank had given a bank guarantee to the government concern. So banks are saying from the date of bank guarantee is expired on particular day. Banks are saying that from that day 1 year it is valid. Is it? Is there any circular in this bank? That they are telling it is there, but we have not seen. Sir, we should see. Well, first we should see. No, out of your experience, have you faced this? Sir, I have not faced this type of. Every bank is having the system. When it is expired, there is another clause. Extended clause is mentioned there. After that period, after that bank writes to return the bank guarantee, then it comes, then they delete from the system. You see what is the bank guidelines in this regard. Sir, I have come across, I was a IOB central auditor. I came across with this situation. The is renewing, but the borrower is NPA. So when borrower is NPA, the bank guarantees are being renewed. So when we have raised a question, they are saying that if we don't renew, maybe borrower may invoke. So for that reason, we are renewing. Is it the explanation is genuine? What they are renewing? Bank guarantee. If one account is NPA, no limits should be renewed. But the bank guarantee is being renewed. Limit is not renewed. Bank guarantee is usually it is renewed. It is, you mean it is extended? Extended. But point is this, in that case, what we have to see, when it is being extended, what is the security? It is the performance or financial? No, it is a loss asset. It is D3, loss asset. Still they are renewing. Sir, ideally it can't be renewed. That they are saying that if we don't renew, it is after the expiry 1 year tak unko valid hai, they may invoke. For that reason, to avoid that, we are renewing. It's a complicated situation, but the problem is not yet solved. If it is a deep, I think it should not. Because point is point. Point is एक not renew suo moto, any bank cannot renew it. Favor, it is issued. There must be a letter, then it has to be extended. Yes, they are giving. Borrower is giving. Borrower ko dene ka kya hai? Borrower is giving, and on that letter they are renewing. So certainly that letter must be there, na? Ultimately extension हो रहा है, agreement. Yes, extension हो रहा है. Is it possible, or is there any provision that they can do? So there is an issue. That is my query. Okay, sir. It is a doubtful. You have said. So that we have to see point from you. Not doubtful. That is a good thing. Let me see that and SMS your number to me. I will get back to you by tomorrow on this. Okay, sir. Okay. That is my commitment to you. You take the number for my mobile number. You note down 9810. Sir. 9810 502055. Okay. 9810 5020. Sir. 989. आप मेरे को अपना नंबर बताइए. You tell me. 94370. Just 1 minute. 94370. Yes. 33114. 33114. I will get back to you. I am repeating your number. 94370 33114. Yes, sir. I will get back to you by tomorrow. Yes, sir. Yes. Okay. Sir, in my opinion on this, sir, the bank guarantee should not be renewed, but the bank guarantee should not be released also until the period is elapsed. It is not being released, but it is renewed. Sir, point is this, we have to see outrightly, because the very complicated issue is there.
Yes, So sir. we have to, Yes, sir. an asset is a loss asset. That is what he is Yes. saying. That is what we have Yes, to sir. see. Yes, sir. Because there is one aspect of this. If it is being extended, ultimately it become loss asset. Yes, sir. First Yes, of sir. all, Yes. bank Yes, should sir. come out of the risk. One is BG is expired. There is one more clause is there. They can make a claim within 3 months or the 4 months. Party will certainly give the extension. It will be done. But point is this: if it is invoked today, already is a loss assets. Bank Yes. is in the problem. Yes. Bank has to make the full payment. Yes, they are telling that bank is Yes, the point is that. yes, in I have their raised case, this issue in a board meeting also. absolutely, sir. You are absolutely right. Even then, what I am thinking, I will come back to you. Whether the provision is to be made for that loss also, Yes. because it is coming to the loss. Yes, provision is made. Provision for 100% is there. They are saying provision is made. Provision for BG. Yes. Sir, I am telling provision for contingent, provision, actual provision for BG loss. Yes, provision for BG also made. Because it is ultimately to secure from invoking, they are making provision wise, they are telling we are making 100% provision. Okay, you provision is, I am not doubting, but why here? Sir, point is this: if as a सेंटर स्टेचुटरी ऑडिटर, ये अगर बैंक ने बैंक गारंटी का भी पूरा प्रोविजन बना दिया गया है, सारा प्रोविजन सुन लीजिए, सारा लॉस बुक हो चुका है. Even BG loss has been booked. So far as my accounts are concerned, there is no issue. There is no issue. My submission is only thing is not serious to recover. That is only, sir, only point comes here is whether the bank procedure to extend it is correct or not. That is the point. Yes. Okay. As a policy, for provision has been made, then fine. Provision होने के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है. That you have done very good. That is but what I recovery, sir, provisioning is very, sir, recovery is important, sir. Recovery point. Sir, I am making the provision for which I have not made the payment. As an auditor, I have to first, because the money is gone, I have to make the provision. So for a recovery, bank has already booked the loss of it. Yes. To that extent, as auditor, I am okay. Now that point is this: whether it should be extended or not, we should see the master circular. Yes, sir. Then we will come to that. Yes, sir. Yes, that is my question. Okay, thank you. Thank you. Next question, I guess, is in chat from Dinesh Agarwal ji. He's asking, sir, regarding security value, whether we should add primary as well as collateral in case of NPA accounts. Yes. Okay. So over the secured portion calculation करने के लिए collateral हमको लेना ही पड़ेगा. Same way वो 50% clause और 10% clause, उसकी भी calculation आपको total collateral सब चीजें निकाल करके then we have to go for this. It is a fall in the value of security more than 50%. Not only the stock, we have to take for that purpose collateral also. And even in the case of the security also, we have to go with this. यही वजह है IRAC norm circular के अंदर एक जगह लिखा हुआ है. आप provision के अंदर पढ़ेंगे, the stock has to be conducted above ₹5 crore every year, and valuation of the property is to be done after every 3 years. That is the reason it has been given. और बताइए. Sir, एक मेरा question है, sir, last year during the audit I had come across, there was an education loan and loan was of a good amount, and borrower का savings account भी है, FD भी है, and उन दोनों account में पैसे भी हैं अच्छे, and loan लिया गया है foreign institution से studies के लिए, and studies खत्म हो गई है और moratorium period भी खत्म हो गया है, and बैंक ने जब recovery के लिए proceeding start की letter भेजा, तो बिकॉज सामने वाला भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तो वो कोर्ट से सर स्टे लेके आ गया है कि यू कैन नॉट डू एनी रिकवरी इन दिस अकाउंट, एंड कोविड की वजह से उनका जॉब नहीं लगा है, दे आर लुकिंग फॉर जॉब, एंड वंस द जॉब इज अवेल्ड, बैंक विल बी इंटिमेटेड एंड बैंक कैन रिकवर द लोन अमाउंट फ्रॉम दिस. तो उसके वजह से ओवरड्यू है सर, और ऑलमोस्ट एनपीए ही है सर पूरा, लेकिन वो लोग एनपीए में भी क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं और रिकवरी भी नहीं कर रहे हैं. तो सर दैट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन एज एन ऑडिटर. देखिए सर, एज एन ऑडिटर तो मैं यही कहूंगा, सो फॉर एज एनपीए क्लासिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव टू, आरबीआई ने ये कहा है आप रिकवरी मत करो, आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि आप इसको एनपीए मत करो. पहली बात तो ये,
अब एनपीए के क्लासिफिकेशन के लिए तो आरबीआई की गाइडलाइंस चलेंगी। आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सभी को बेनिफिट दिया है। आरबीआई ने 2 बार एक्सटेंड भी करी है। अगर आप उन सर्कुलर्स को पढ़ेंगे, एक एमएसएमई का बना दिया, एक नॉन एमएसएमई का बना दिया, एक पर्सनल का बना दिया, सबका किया है। गलती तो फिर बैंक की रही है कि उन्होंने उसको किसी भी स्कीम में रिस्ट्रक्चर उस टाइम पे नहीं किया। बट एनी विच वेज आई एम ड्रिवन बाय, मैंने इसीलिए पहले बोला इस साल काफी केसेस जो कोविड के टाइम में रिस्ट्रक्चर भी हुए हैं, उनकी अमाउंट ड्यू होने वाली है, जरा उनको भी ध्यान से देख लेना। पता लगा वो ओवर ड्यू हो रहे हो और बैंक ने उनको एनपीए नहीं किया हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस टाइम। सर आई एम गवर्न्ड बाय दिस। तो सर वो एनपीए होगा और सर उसमें रिकवरी नहीं कर सकते बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर है उनके पास। वो उनके पास, मैं रिकवरी, मेरे को तो एनपीए से मतलब है एज ओवर एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज कंसर्न। या ऊपर से कुछ मेरे को ला के दें, या ये कोर्ट में जाए, आप हमें एनपीए की भी डायरेक्शन दे दो। अच्छा, वो थोड़ी so will that supersede RBI direction in that case की? सर मेरे हिसाब से लॉ फिर वो तो जब मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर ही आ गए आरबीआई की डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो वो एक बार तो मुझे मानना ही पड़ेगा। There is no other option. And do we need to report it otherwise in observations or this that there is something like this? देखिए सर, अगर एनपीए बनता है तो एनपीए हमें करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि अब वो कोविड की रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने नहीं करी, तो इसके अंदर बैंक की क्या गलती है, या तो कहीं इनकी रिप्रेजेंटेशन में इशू है। अब क्या स्टेटस फाइल के अंदर निकल के आता है उस टाइम, वो अब देखा जाएगा। उसके बाद ही आई थिंक वी हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ द फाइल एंड टेक अ कॉल। सर एक और सिमिलर क्वेश्चन सर आई वुड लाइक टू टेक। ये सर केसीसी के केस में 3 लाख का जो लिमिट है, हाँ, वो ओवर ज्यादा हो गया, उससे एक्सीड हो गया है, तो 3 लाख तक मिलेगा। तो 3 लाख मैंने आपको केसीसी के मास्टर सर्कुलर में ये इशू बड़ा डिबेटेबल था पहले, जब से 2 साल पहले सर्कुलर आया, 3 एग्जांपल दिए, उसमें क्लियर कर दिया है अगर किसी की 10 की केसीसी है तो उसको 3 लाख मिलेगा। उसमें एक एग्जांपल ये भी है जो आप बोल रहे हैं। राइट सर, दैट इज देयर सर। सर केसीसी के केस में काफी जो देखा गया सेम डे डेबिट क्रेडिट होते हैं, उस केसेस में अपने को सभी ऑडिटर्स को क्या स्टैंड लेना चाहिए? ऑडिटर को क्या स्टैंड लेना, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो आपसे सुनना चाहता हूं। सेम डे से यदि है और सस्पिशियस लगते हैं तो वी शुड क्लासिफाई एनपी। सर आपके पास सरप्लस पैसे थे, आप सवेरे 10 बजे गए बैंक में जमा करा दिया, शाम को जरूरत पड़ेगी आपने निकाल लिया। मैं तो ये कहूंगा, आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? How we can substantiate that? If the same if I am doubting on this transaction, then it is my duty to substantiate it. Yes. Can you do? No, we can't do. So then we can't do. Then we should not cross the line. Right. If the cash transaction is not done, some entry is made, then we can. That you can, like gold loan का मैंने आपको एक अभी एग्जांपल बताया था, उस केस में बिल्कुल सब्सटैंशिएट हो गया कि बैंक ने फंडिंग करी और बैंक ने इधर से लोन दिया, वहां से उधर ट्रांसफर किया और वहां से निकाल के उसको एडजस्ट कर दिया। वो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। परफेक्ट सर। और बताइए सर, थोड़ा मुझे I think sir, all detailed so far. LFR, it is a big challenge for last year and current year also. Then all the detailed explanation related to LFR as made by you is really helpful. Sorry to interrupt you. गौरव जी, सर का नंबर है, आप प्लीज बाद में कर लीजिएगा, सर का सारा दूसरा इन्वॉल्वमेंट भी है। तो sir, thanks a lot being with us. And thanks a lot during this. I think I've heard many times in the you have associated with Views Exchange also in the last seminar of Calcutta online. So many seminars you are enlightening with the bank audit procedures. Thank you, sir. And संदीप जी, गौरव जी ने बड़ा अच्छा उसका जो एक इशू आ रहा था बीजी का, क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी एनपीए है, एनपीए का गौरव जी इसमें इनको बड़ा उन्होंने वो क्लियर ही बता दिया, उन्होंने बीजी का भी नॉन फंड बेस का पूरा प्रोविजन ही कर दिया है। जब प्रोविजन ही कर दिया है तो अब मैटर सिर्फ यहीं तक प्रोसीजरली रह जाता है इसके अंदर, जो बीजी को रिन्यू बैंक इसलिए कर रहा है, कल को कोई और प्रॉब्लम implications ना आ जाए। दैट ऑडिटर हैज टू सी फ्रॉम द फाइल ओनली। सो फार एज ऑडिटर इज कंसर्न, पूरा प्रोविजन ही मैंने कर दिया है नॉन फंड का भी।
So that is fine enough so far as auditor is concerned. और इसमें सर कंटिंजेंट लायबिलिटी की रिपोर्टिंग में इनको फुल रिपोर्ट करना पड़ेगा लफार में कि दैट हाँ, वो सर नहीं, अब उसमें दो इश्यूज हैं। जब सर पूरी वैल्यू का मैंने प्रोविजन ही कर दिया P&L को डेबिट करके, तो कंटिजेंट क्यों वो वाला लायबिलिटी क्यों करूंगा मैं उसकी? सर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना वहां पे लफार में, उस हेड के अंदर सर वो आप कनेक्ट करके ऑब्जर्वेशन अपनी दे करके आ जाए, दैट इज वन पॉइंट, यू आर राइट। और सो फar एज अ प्रोविजनिंग इज कंसर्न, जिस चीज का पूरा प्रोविजन कर दिया बैंक ने, दोबारा कैपिटल एडिक्वेसी में थोड़ी लेके जाऊंगा मैं उसको, क्यों? सर मेन रिपोर्ट का पार्ट बनेगा ये, क्योंकि सर मैं आपकी बात मान रहा हूं। अब आप सुनिए, जब मैंने प्रोविजन कर दिया, जब कंटीजेंट लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, या तो मैंने उसकी पेमेंट कर दी या उसके प्रोविजन है, एटलीस्ट कैपिटल एडिक्वेसी में उतना पोर्शन कम होके जाएगा, क्योंकि उसका पूरा प्रोविजन मैं कर चुका हूँ। बेसल नॉर्म्स के उसको करना पड़ेगा वो उसके हिसाब से, कोई प्रोविजनिंग मेरी यहाँ पर हो चुकी है। चलिए और बताइए सर। सर एक क्वेश्चन सर, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड सर, वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो का जो अकाउंट होता है जहाँ पे डिस्काउंट करा रहे हैं सर, ब्रांच में लाइक लास्ट ईयर आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी, ब्रांच में थी वो वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो, ब्रांच वालों को कुछ पता ही नहीं है, दे आर क्लेमिंग की सर ये ऑटो डेबिट होते हैं और परसेंटेज जो उनको ब्रांच में इनकम बुक हो रही है दैट इज बियॉन्ड देयर स्कोप। सर जी, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट, our account with you, your account with us. First of all, most important thing, it has to be reconciled. और रिकंसिलिएशन में जरा एंट्री देख लीजिए कितनी पुरानी पड़ी है, और पता लगा पैसे पड़े हुए हैं, कस्टमर को डेबिट नहीं करे हैं, इंटरनेशनल अकाउंट में वहां से डेबिट होके आ गए, दैट इज माय लॉस। पुरानी एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, और नई भी है तो क्यों पड़ी है? एनपीए बचाने के लिए वहीं पे अकाउंट खड़ी रख दी, आपके ब्याह पे रिमिटेंस हो गई बाहर अकाउंट से, रिकंसिलिएशन में खड़ी है, अगर वो एंट्री में आपके अकाउंट को डेबिट कर दूं तो आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा। सेम चीज इंटर ब्रांच के अंदर, सेम चीज अकाउंट विद अदर बैंक्स, सेम चीज नोस्ट्रो वोस्ट्रो। यही वजह है एलएफ का स्पेशलाइज ब्रांचेस में नोस्ट्रो वोस्ट्रो के अंदर लिखा हुआ है अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड एंड गिव द लिस्ट ऑफ द ऑल पेंडिंग एंट्रीज, और उसकी वहां से स्टेटमेंट आती है, दैट वी शुड मैच। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, नोस्ट्रो वोस्ट्रो के अंदर जो एंट्रीज पेंडिंग रिकंसिलिएशन पड़ी हुई है, so we should take care of it. सर उसमें रेट में बैंक के पास पावर है कि दे कैन चेंज द ऑल्टर द रेट जो सिस्टम में है, और द रेट्स आर डिफाइंड बाय द ब्रांच लेवल, बैंक लेवल। सर ये आप बैंक की पॉलिसी होती है, इसके अंदर किस रेट्स के ऊपर बाइंग रेट, सेलिंग रेट किस रेट पे होनी है, ये यहाँ पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। दैट वी हैव टू सी द स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑफ द बैंक कि उसकी एक्सचेंज डिफरेंस की कैसे एंट्री डालनी है, क्या डालनी है, दैट यू हैव टू सी द बैंक पॉलिसी। गॉट इट सर, थैंक यू। चलिए सर और बताइए। Sir, thanks a lot for, and this token of love from our side, e-token for your e-library. We will send it across to you. Thank you. So we look forward to have you again and again in our platform in coming days. Thank you so much on behalf of our thank you sir. Thanks you all the delegates. It's 250 plus delegates today. Thanks to all for joining our seminar. We will and we are having this physical seminar on 1st of April. For all of us who have joined, we would like to inform, circular sabko gaya hai, so we would like to meet in person after a long time, and seminar is at BCCI in association with Views Exchange. Sandeep, would you like to share about it more? Yeah, it's BCCI 6 number NS Road. It's all about income tax and NBFC, ROC and GST. We are covering all the 4 domains. So it will be a great session. Please join us in a large number. Yeah.